चेक करेंगे एक बार। हो रहा है या नहीं? हो गया? वॉइस आ रहा है ना मेरा वॉइस? अभी आ रहा है ना वॉइस? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, प्लीज अवेलेबल रहना प्लीज। ओके 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 ओके। Welcome all. There was a problem. Hello. Yeah. Can you hear me? पूरा लाइक लिंक ही चेंज हो गया हमारा। पता नहीं यार, सडनली इट स्टॉप स्ट्रीमिंग। आई डोंट नो। वॉइस आ रहा है सर? हो गया हमारा। पता नहीं यार, सडनली इट स्टॉप स्ट्रीमिंग। आई डोंट नो। They generated new link. So kindly मतलब those who missed, मतलब जिनके पास लाइक लिंक नहीं है, यू शेयर विद देम सो दैट जिनको नहीं, because we generated totally a new key, totally new key आ गया है सर। चलो, shall we start? अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, बिकॉज योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Shall we start, sirs? Okay, na? Chalo. So, my plan is I have selected questions in such a way that almost all sections are taken into account, like pure substances, steady flow, unsteady flow, first law of thermodynamics. मैं थोड़ा मोबाइल को साइलेंट रखता हूँ सर। लेट मी कीप इट साइलेंट। ठीक है, हाँ। तो all these steady, unsteady, pure substances, everything is taken into account. Okay, without wasting time, and I have a request, sir. Please keep calculators ready. मेरा calculator कहाँ है रे? Please keep calculators ready. Now, my aim is like because अभी तो पूरा stream की ही change कर दिए सर हम। सॉरी लिंक ही चेंज कर दिए। तो पुराना लिंक नहीं है सर, इट्स नॉट ओल्ड लिंक। जिनके पास लिंक नहीं है, आपने इफ यू विश यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, चलो, स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम स्टार्टिंग सर। शैल आई स्टार्ट? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं सर? मेरे प्यारे बंधुओं, या या ओके, लेट्स स्टार्ट सर। लेट्स स्टार्ट। Let's take the first question without wasting any time. I have taken the first। एक सेकंड, आपके कमेंट्स भी देखना पड़ता है ना मुझे। टेक कैलकुलेटर सर, प्लीज टेक कैलकुलेटर्स। एक फर्स्ट थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए इनिशियल 2-3 क्वेश्चंस थोड़ा इजी है। बाद में यू विल बी सीइंग, प्लीज लुक एट, कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस है सर। क्वेश्चंस आर वेरी क्लास क्वेश्चंस। देखो, वंडरफुल क्वेश्चन सर, वंडरफुल क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, all new questions, all new questions. Let's try to solve these questions sir। ठीक है ना? चलो, okay, let's start from the first question। take this question। okay, chalo, are you ready sirs? so please okay, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। अगर कोई चंदन आप है, चंदन आप है ना बेटी?
सो इफ देर इज एनी डिफिकल्टी आप मुझे कॉल कीजिए। चंदन बाबा, अगर कोई डिफिकल्टी है तो मुझे कॉल कीजिए। ओके ना? ओके सर, बोलो बोलो बोलो, एक सेकंड, अभी स्टार्ट कर लेंगे स्ट्रेट अवे। ओके, एनी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो सर, इज इट फाइन? इज इट फाइन? ऑल गुड वॉइस विथ सब? डियर स्टूडेंट्स, ऑल गुड ना? यस, वेरी गुड। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोस, मेरा कोशिश यह है कि आपका टाइम वेस्ट ना करें। आई एम रियली सॉरी फॉर, बिकॉज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, वी जनरेटेड न्यू लिंक, उसके कारण प्रॉब्लम हुआ। अब देखो, चलो, ए थर्मोडायनेमिक, मैं वॉल्यूम मेरे इसका स्लो कर देता हूं, ठीक है। अंडरगोस अ साइक्लिक प्रोसेसेस ए बी सी डी E A. देखो सर, it is undergoing a process like this, like this, like this, like this, and like this. This is the cycle undergone by the system. Now, he is asking the work done by the system during the complete process. ये तो straight question है सर, अच्छा question है। देखो, if you see this top, it is in the anti-clockwise direction. All anti-clockwise cycles on PV diagram are work absorbing cycles, तो negative work होगा। Similarly, if you take this one, देखो आप CDB, I am taking CDB, it is anti-clockwise, so therefore work will be negative hoga. So what is the area of this? Half into base is 2V1, this is V1 and this is 2V1. So this base is 2V1 minus V1 is V1 into this height. What is this height, sir? This is 4P1, this is 2P1. The difference is 2P1. So therefore ये कट जाएगा, तो CDB work is minus P1 V1. Correct na, sir? Exactly. Now let us go for ABE. ABE. If you see ABE, it is in the clockwise direction. तो इसका work होगा plus होगा. What is that? It will be work is plus half into the base is 2V1 minus V1 is V1 and the height is 2P1 minus P1 is P1. So this work is positive, this work is negative. So work is a path function. So अगर आपको network चाहिए तो दोनों को add करना सर. So therefore half into P1 V1 plus of, ये positive work है, this is a positive work and this is a negative work. This upper triangle is anti-clockwise, इसका area calculate करो. Lower triangle is clockwise cycle, positive है तो add कर देना. It is minus P1 V1. So अगर आप इसको add कर रहे हैं, it will be minus P1 V1 by 2. So the answer is C. Anyone got this answer, sir? Anyone got this answer, sir? Yes, very good. Let's go to the next question. Please read this question. I request everyone to read this question. सर मेरा कोशिश यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट करके नीटली एक्सी, एमई और सीएच के लिए कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, ये वाला देखो। कंसिडर टू हीट इंजिन्स ए एंड बी having 40% efficiencies each. There are two engines A and B. Both have equal efficiencies, that is 40%. Engine A is supplied with heat from a source at 500 Kelvin. There is engine A. To that engine, some heat Q is supplied at a temperature 500 Kelvin. And engine B is also supplied with same amount of heat. Two engines absorb same amount of heat, but let us see what is the difference. But from a source at 1000, A is absorbing from 500, B is absorbing from 1000, but both are at same temperature, both absorb same amount of heat. ठीक है sir. Both engines have sink temperature of 300. Which of the following is correct? दोनों का
सिंक का टेम्परेचर सेम है। अब देखो सवाल क्या है, सिंस बोथ इंजिन्स आर हैविंग actual work of 0.4 cube, therefore both are performing equally well. First wala. Second, sirs, second, engine A is performing better than B, engine B is performing better than A, can't decide and insufficient data. Dekhte hai sirs, let's see. Whenever engines have same efficiency, it is the first law efficiency. तो actually आपको देखना है second law efficiency, वो क्या है देखेंगे सर। There is engine A, this is 500 Kelvin, it is absorbing some amount of heat, this is engine A, let us say it is developing work A and rejecting some amount of heat at a sink temperature of 300, this is engine A. There is another engine B, it is absorbing the same amount of heat, he clearly said same amount of heat but at a temperature of 1000, this is engine B, let it develop work B and it is rejecting, I don't know what is this heat, so it is at 300 Kelvin. दोनों का सिंक का टेम्परेचर सेम है सर, they have same sink temperature, ठीक है। Now he has given that the efficiency of A is 40% and the efficiency of B is also 40%, ठीक है सर। Now look at carefully, efficiency is equal to net output, I am talking about this, net output is WA and the input is Q, output by input. So what is the efficiency of A? 40%, it is WA by Q. So the work of A is 0.4 times Q, excellent. Now let us see what is the work of B. Work of B is equal to, whenever you want work, it is efficiency into heat supply. The efficiency of this is 0.4 and the supply heat is Q. ध्यान से सुनो सर, दोनों का वर्क सेम है, बहुत बढ़िया सर। Can I say both are performing equally well? सुनो carefully sirs. Now whenever you have a doubt like this, go to the second law efficiency. What is the meaning of इसका थोड़ा physical meaning भी देखेंगे सर। Let us calculate the maximum work or like क्या बोलते हैं इसका, the efficiency of this is 40. Let us calculate the reversible efficiency. What is the reversible efficiency? 1 minus T lower by T higher, it is 500. I am calculating the maximum possible efficiency of this, that is 1 minus T lower by T higher, that is the reversible efficiency is ये कितना आ रहा है सर? It is 0.4. Excellent sir. Now compared to this, exactly, what is the efficiency of B sir? Maximum reversible, 1 minus T lower, whenever I say reversible it should be in terms of temperatures, T lower is 300 by T higher is 1000, ठीक है सर। What is the efficiency of B reversible? ये कितना आ रहा है सर? 0.7. Excellent sir. Now सुनो carefully, if you are checking the second law efficiency, it is the second law efficiency is given by the actual efficiency by maximum efficiency or reversible efficiency. So if I see the second law efficiency of this, what is the actual efficiency? It is 40%. What is the reversible efficiency? It is 40%. So the second law efficiency for this is 1, which is 100%. Excellent sir. Now come to this, what is the second law efficiency? It is the actual efficiency is 40% and the maximum is 0.7. So we get the second law efficiency as, let me check sir, I have already calculated, एक बार मैं values ले लेता हूँ, let us take values, कहाँ गया रे, no paper का है, it is 0.5714. physical meaning क्या है sir? The physical meaning of this is, ध्यान से सुनो sir, the physical meaning of this is, it is operating up to the maximum efficiency. मतलब क्या मतलब है सर? The meaning of this is the actual efficiency is 40%, the maximum possible reversible is also 40%. मतलब जितना maximum possible है उतने capacity के लिए ये work कर रहा है. That's why its second law efficiency is 100%. But ये वाला, it has the capacity of 70% efficiency, but actually it is operating only 40% of the maximum. Matlab it is not operating to the maximum capacity. It can develop more work, but it is not developing. That's why its efficiency is less. Therefore, which engine is performing better, sir? जिसका second law efficiency ज़्यादा होता है. Is this question clear, my dear students?
Is this question clear, my dear students? If you say yes, then I'll proceed to the next question. So which one, even though आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर, दोनों का वर्क सेम देखकर कंफ्यूज मत होना सर, as both are developing same work, that doesn't mean कि they have same they are performing well. No. Is the question clear sir? तो आपको क्या करना है? You have to see the second law efficiency. Hope you understood this. बहुत बढ़िया. Now the answer to this question is engine A is performing better than engine B. Is it correct sir? मेरे प्यारे दोस्तों, इज इट ओके? बोलो सर, बोलो रे. हाँ जी सर, हाँ जी, बहुत बढ़िया. अब ये आइए. नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन. कैन यू सी सर? क्या आप देख पा रहे हैं सर? नहीं दिख रहा है या दिख रहा है? कैन यू सी द क्वेश्चन सर? कैन यू सी दिस क्वेश्चन सर? यस और नो? इंजमामुल हक, लवली. इंजमामुल हक, दिख रहा है क्वेश्चन? जूम में इसको कर नहीं सकता हूं ना सर. अब मैं बताता हूं. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? आई टेल यू. चलो कोई बात नहीं. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? आई टेल यू. मैं बताता हूं. 1 mole of a monoatomic ideal gas. Look at it, is a monoatomic ideal gas. Okay, मैं बताता हूं सर. Don't worry. I'll tell you. 1 mole of a monoatomic ideal gas is undergoing processes EFGE. देखो, EFGE. Okay, EFGE, ठीक है. And EFHE, दो साइकिल्स है सर. On PV diagram, the processes involved are purely isochoric, isobaric, isothermal and adiabatic. ठीक है सर. He has given, देखो, don't worry sir, मैं बताता हूं क्या है. Don't worry sir. He has given some processes and they constitute a cycle. He is asking work done in each process. Let me redraw आपके लिए. Let me redraw sir. मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सर. देखो, क्योंकि नहीं दिख रहा है ये, मैं यहां पे I'll show you. इधर देखो सर. सवाल ये है सर. ओके, यस, देखो सर. दिस इज E, this is F, this is H, this is G. Okay, no problem at all. ठीक है सर. Now this pressure is given as P naught and this is given as 32 P naught and this volume is given as V naught. Okay, this is on V diagram. Now the question asked is, what is the work in process GE? What is the work in process GH? And what is the work in process FH? And what is the work in the process FG? He has given this and ये पूछ रहा है, match the following question पूछा है सर. देखो, let's do this. Don't worry, अभी मैं किया ना. कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द प्रोसेस. एक बार देखना सर. दिस इज माई F, this is F. सुनो केयरफुली. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई, कैन एनीवन टेल विच वन इज, देखो सर, क्लियर है? हाँ. कैन यू टेल मी विच वन इज isothermal, which one is adiabatic? I know that, देखो, EF is constant volume process. EF is constant volume and GE is constant pressure process. Now you tell me. देखो, मैं यहां पे कलर चेंज करूंगा सर, so that you can see clearly. Yes. बोलो सर, which one is isothermal, which one is adiabatic? देखो, कैन आई से, देखो, मोर स्लोप, ये देखो ज्यादा स्लोप वाला, कैन आई से FH is adiabatic? कैन आई से FH is adiabatic? कुछ तो बोलो. FE is adiabatic?
बोलो रे, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है? इधर देखो, एफ एच देखो एक, अरे यार क्या हो रहा है आपको, यू फॉरगॉट द बेसिक। ऐसा है, इस दोनों का नेगेटिव स्लोप है, कंपेयर टू दिस दिस इज मोर, सो देयरफॉर ऊपर वाला इज एडियाबैटिक, सो एफ एच इज एडियाबैटिक, करेक्ट, एंड एफ जी इज आइसोथर्मल। इज इट करेक्ट सर? इज इट करेक्ट सर? बोलिए सर, इज इट करेक्ट? यस। अब क्या करेंगे सर? नाउ यू टेल मी। एक काम करते हैं सर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क, pressures are given, you try to calculate volume at G, volume at H। ठीक है सर, how do I calculate volume at G? ध्यान से सुनिए सर, F और G is isothermal, FG is isothermal, तो for isothermal FG is isothermal given the working fluid as an ideal gas. For isothermal process, you know that as it is an ideal gas, M is constant, R is constant, T is constant, तो PV is constant। तो कहां से isothermal हो रहा है सर? F से लेकर G तक, so therefore PF VF is equal to PG VG. Am I right, sir? PF, this is isothermal. PF VF is PG VG. What is PF? 32 P naught. What is VF? VF, this is the volume. VF is, this is the volume V naught. ठीक है sir. Should be equal to PG, I don't know. I know. PG is, the pressure at G is P naught. So therefore, this is P naught. And VG we do not know. तो P naught कट गया, तो volume at G is 32 P naught. Excellent sirs. Volume at G, any problem sirs? Any problem? Excellent sir, excellent. Now how do I calculate, my dear students, volume at H? Can anyone help me? देखो, F से लेकर H तक this volume is 32 P naught. Okay, now can I calculate volume at G? Yes sir. PV gamma is equal to constant because ये adiabatic. Of course, whenever he says adiabatic, हम तो यहां पे तो रिवर्सिबल मान के चल रहे because all paths are clear. तो क्या करेंगे सर? देखो, PF VF power gamma is equal to PF VF power gamma is equal to FH। देखो कौन से प्रोसेस को कनेक्ट कर रहा है? adiabatic is this, ये adiabatic है सर FH, तो it will be PH VH power gamma। Can you tell me what is gamma? एक बार देखना सर, what is the working fluid? Monoatomic। For monoatomic, what is gamma? For monoatomic, printing mistake कहां हुआ सर? प्रिंटिंग मिस्टेक कहां हुआ? कहां पे? ओह, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है ना रे, माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं सर। ओके सर, खुश हो कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होगा सर? 1.667। कौन है रे वो 1.4 बोलने वाले? उसको चाकू से उड़ा देना सर, उसको मोनो एटॉमिक के लिए 1.4 बोलने वाले को चाकू से उड़ा देना सर। इट इज 5/3, 1.667। ओके, वेरी गुड सर। अब देखो, पीएफ, व्हाट इज द प्रेशर एट एफ? 32 पी नॉट। व्हाट इज द वॉल्यूम एट एफ? वी नॉट। देखो वॉल्यूम एट एफ वी नॉट, गामा इज 5/3। पीएच, पीएच प्रेशर एट एच, इधर देखो प्रेशर एट एच इज पी नॉट, वॉल्यूम एट एच आई डोंट नो, गामा इज 5/3। एक्सेलेंट, तो पी नॉट कट गया। तो व्हाट आई डू इज आई वांट वीएच, तो आई विल रेज बोथ साइड्स विथ 3/5, उल्टा करो 3/5, सो 32 3/5 इंटू ये 3/5 गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू VH, I have raised both sides 5/3, both sides 5/3, 3/5. So 3/5 cut गया 3/5. So 32 can be written as 2 power 5. तो 2 power 5 whole power 3/5, V naught is equal to VH. तो ये 5 गया, 2 cube is 8, 8 V naught is equal to VH. तो VH is equal to 8 V naught. तो now मेरे पास all volumes
and all pressures are known. Now I can easily find out the work. Whenever pressure volumes are known, I can easily find out the work. Now you tell me, he is asking in GE. मेरे प्यारे दोस्तों, what is the work in GE? Area under this. GE का वर्क चाहिए तो area under this, it is a constant pressure. Length is GE का वर्क चाहिए, length is P naught, width is 32 V naught minus V naught, 32 V naught minus V naught. I repeat, this length is P naught, this is 32 V naught into minus V naught. तो कितना आ रहा है सर ये? 31 P naught V naught. Is the work of GE clear, sir? Is the work of GE clear? Bolo sirs, bolo sirs, bolo sirs. Excellent sirs. Now he is asking GH. Definitely GH का वर्क कम होगा इससे. तो this area, मेरे प्यारे बंधुओं, I want this area. I want the work in GH. GH is this वाला. GH is this वाला. So this is GH. So what is GH work, sir? Length, ये vertical length कितना है? P naught into ये length, ये कितना है सर? This is 32, this is 8. 32 V naught minus 8 V naught. So 32 minus 8 is 24. So it is 24 P naught V naught is the work in GH. Excellent, sirs. GH का वर्क कितना है सर? 31 P naught V naught. GE का 31 P naught V naught. GH का 24 P naught V naught. What is FH? FH is adiabatic. FH is adiabatic. यहां कैलकुलेट करेंगे सर. FH is adiabatic. यहां कैलकुलेट करेंगे. एक सेकंड, मुझे जगह चाहिए सर. वेरी गुड. I want this. How to find adiabatic work? W adiabatic is P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. So FH, F is initial, ये फाइनल है. तो P1 V1 के प्लेस में क्या आएगा सर? PF VF minus adiabatic is, this is H, यहां तक है, this is adiabatic. So PH VH by gamma is 5 by 3 minus 1. Wonderful students of India. What is PF, sir? PF is 32 P naught. VF, what is VF? It is just V naught minus PH. What is PH, sir? P naught. And what is VH, sir? VH is 8 V naught by, इसको लिखेंगे 5 minus 3 is 2, 2 by 3. Excellent, sir. तो वर्क adiabatic, ये कौन सा वर्क है? FH is equal to 32 minus 8 is 24 P naught V naught by 2, ये 3 ऊपर जाएगा सर. 2 1s 2 12s, 12 into 3 is 36 P naught V naught. Excellent. And I want the work in FG. सर बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सर? क्या बच्चे है रे, मेरे बच्चों का काम होगा. मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ना, चाह रहा हूं आप लोग ना. अब ये रिहर्सल क्वेश्चंस खत्म होने के बाद मजा आएगा सर. आर यू रेडी? ओनली इंजामुल हक इज गिविंग आंसर. बाकी के लोगों को क्या हो रहा है? मोनीश, आशीष, प्रिंस, प्रशांत. वेरी गुड सर. नाउ last but not the least, I want to calculate the work in isothermal. Can you give me the equation for isothermal work, sir? देखो देखो, FG is isothermal. FG isothermal work is P1 V1 ln V final by V initial. याद है सर? This can also be written as P2 V2 ln P1 by P2, because isothermal के लिए P1 V1 is P2 V2. We can write in different forms. Is it clear? Is it clear? Excellent, students of India. Isothermal is starting from F. तो P1 V1 means P1 V1 means PF VF. तो देखो P1 V1 का मतलब PF VF. Isothermal is from F to G. तो it will be VG. Final is VG. Initial is VF. Very good, sirs. PF. What is PF? 32 P naught. VF. What is VF, sir? V naught. ln VG. What is VG? 32 V naught by VF. What is VF, sir? VF यहां पे V naught. तो ये कट जाएगा सर. तो you will get 32 P naught V naught ln 32. Can I write log 32 as 2 power 5? Yes, sir. ये 5 इधर आएगा. So 32 into 5 is 5 to 10. So 160 P naught V naught ln 2. तो ये आंसर है सर 160 P naught V naught ln 2. Excellent, sir.
इज द क्वेश्चन क्लियर सर? मतलब सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए सर। गलत गलत। अच्छा आप ln2, बट आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ln सर, ln में दिया है, इसीलिए एक बार ऑप्शंस देख लेना सर। इधर देखो, तो देखो ऑप्शंस क्या दिया पता है सर? GE is P, Q is GH, R is FH, S is FG. Here options are 160 P naught V naught ln2, ये फर्स्ट वाला। सेकंड इज 36 P naught V naught, थर्ड वाला 24 P naught V naught, फोर्थ वाला 31 P naught V naught. I think we got all. You can match. Is it okay? Yes, yes, yes. मजा आ गया सर। Very good. So this session is beneficial to all those branches which has thermodynamics as the subject. ठीक है सर? Very good. Go to the next question. हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे सर। वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम सर। पढ़ो एक बार। वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम सर। सर ये स्पीड ठीक है या फिर स्पीड थोड़ा कम करूं? बिकॉज आई हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस ना, आई शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ये स्पीड ठीक है या थोड़ा स्लो करूं? आप बताइए, इज दिस स्पीड फाइन? नाउ कैन यू सी दिस क्वेश्चन सर? कैन यू सी दिस क्वेश्चन सर? एक बार देखो प्लीज। कैन यू सी द क्वेश्चन? हाँ 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 मेरे प्यारे दोस्तों, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? अरे यार, आई सेड कैन यू सी दिस क्वेश्चन? कुछ आंसर ही नहीं देते, ये कैसे स्टूडेंट्स है रे, कहां से आते रे? हाँ, फर्स्ट फोकस ऑन आइडियल गैस। At a temperature T1 is heated at a constant pressure to T1. An ideal gas is heated from a temperature T1 to temperature T2 and then expanded reversibly according to PV power n is equal to constant. ठीक है सर? Until the temperature is once again T1. ठीक है? If the change in entropy during the separate processes are equal, then the value of n is. ठीक है सर? अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियरली विजिबल ना? एक बार रीड द क्वेश्चन। There is a constant pressure process followed by a polytropic process. Okay, sir. He said, so let me try to plot this, sir, on TS diagram. You know very well how to represent constant pressure process on TS diagram. Already we have seen on TS diagram, more slope on TS is constant volume, less slope is constant pressure. ठीक है सर? T by CV is the slope of constant volume, T by CP is the slope of this, and when you heat, the temperature increases. This is a constant pressure process. It is heated from temperature T1. Let this entropy be S1. It is heated, that's why the temperature is increasing, and this is my temperature T2. ठीक है सर? And then it is expanded polytropically until the temperature is same. It is expanded. And you may be wondering, sir, ऐसा कैसा है? All these curves I had explained in my class. Clearly मैंने explain किया सर। देखो अब यहां से this point T2, it is expanded to state 3. देखो एक कंडीशन है, it is expanded according to the process PV power n is equal to constant. कहां तक expand किए सर? Expand किए until the temperature is same as T1. तो क्या नहीं से T3 is also equal to T1? एक बार क्वेश्चन देखो। An ideal gas at a temperature T1 is heated at a constant pressure T2 and then expanded according to PV power n is equal to constant until the temperature once again is T1. तो यहां पे expand होने के बाद this temperature is same as T1. And he also said
let this entropy be S2, let this entropy be S3. क्या बोला है सर? The entropy change in this is, let us say it is delta S 2 बोलेंगे, and the entropy change in this is delta S1. Excellent, sir. What did he say, sir? He said the entropy change in both processes is same. तो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है सर? ही इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट n इन टर्म्स ऑफ गामा. मेरे प्यारे दोस्तों, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट? पहले बोलो. देयर आर टू प्रोसेसेस, वन इज कांस्टेंट प्रेशर, वन इज पॉलीट्रॉपिक. वन इज कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, वन इज पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन. तो इट इज एक्सपेंडेड अंटिल द टेम्परेचर T3 एंड T1 आर सेम. ठीक है सर जी. और क्या बोला है सर? Entropies are same in both processes, and he is asking us to calculate what, sir? What is he asking us to calculate? He is asking us to calculate n value. अब कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है सर. When the working fluid is an ideal gas, आपको याद है सर, I gave you 3 equations for entropy. एक बार मैं लिखूंगा सर, एक बार मैं लिखूंगा. इधर देखो, S2, और I will write this as, यहां पे, अरे क्या हुआ? हाँ, S final minus S initial is equal to Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. Another equation is, but these are valid only when the working fluid is an ideal gas. And S final minus S initial is equal to Cv ln Pf by Pi plus Cp ln Vf by Vi. Please tell me, are these 3 equations correct or wrong? प्लीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये इक्वेशंस याद आ गए सर? लेकिन प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, इट शुड बी एप्लीकेबल only when the working fluid an ideal gas. The ideal gas may undergo any process, may it be constant pressure, may it be constant volume, may it be isothermal, may it be adiabatic, no matter, may it be polytropic, no matter what the process is, if the working fluid is an ideal gas, you can apply these equations. ठीक है सर जी, समझ में आ गया. अब हम इसको निकाल ही देंगे सर. आपको रिवीजन के लिए मैं इक्वेशंस दिया. अब देखो सर, let us try to calculate the entropy change for 1 to 2 process. प्यारे दोस्तों, एक बार देखना. Let us try to see the entropy change for 1 to 2 process. देखो एक बार. This is a constant pressure process. This is 1, this is 2. This is S1, this is S2. ठीक है सर. And this temperature is T1 and this temperature is T2. Okay sir. What is the entropy change? देखो देखो, S2 minus S1 is equal to, it is the entropy change for first process. What is the equation sir? Cp ln T final. देखो, initial is 1, final is 2, because process is going like this. Cp ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1, because it is occurring from state 1 to state 2. So final by initial, final by initial. Now you tell me, what is the relationship between P2 and P1? It is a constant pressure process. So P1 is equal to P2. So P2 by P1 is 1. Log P2 by P1 is log 1. So log 1 is 0. This term gets cancelled out. So entropy change in the first process is Cp ln T2 by T1. Please keep this in box. इसको हम, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम बॉक्स में रखेंगे. इसको let us keep it in box. Very good sir. ठीक है. So ये हो गया sir. Now let's go to the next process. मेरे प्यारे दोस्तों, let's go to the next process. This is occurring from state 2 to state 3. Let this entropy change be delta S2. इसको मैं लिखा delta S2. And you know very well this temperature is T3
But already T3 is given as T1 and this temperature is T2. What is the processor? What is the processor? It is PV power N is equal to constant. Now, let us write the entropy change for this. What is the entropy? Someone gave the answer as gamma plus 1 by 2 gamma. Excellent. Excellent, sir. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. इधर देखो सर. इधर देखो. ये है. इधर देखो सर. मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो. Now, so entropy changes S3 minus S2, that is final process is occurring from 2 to 3. ये final, ये initial. This is delta S2 should be equal to क्या लिखेंगे सर? CPLN. देखो देखो CPLN T final by T initial. Final देखो start is 2 end is 3. Final by initial is T3 by T2 minus RLN P2 by P1. Final is P3, initial is P2. Hope this equation is clear. Sir, yahan pe you need manipulations. You should be good at improvising things. मतलब देख के आपको you should see the question and try to analyze properly. देखो एक बार. Let me write this as a delta S2. ठीक है सर जी. Can I write this as a CPLN? What is T3? Already T3 is T1. So T1 by T2. Now look at. My equation is ln T2 by T1. ln T2 by T1. इसको कर दूंगा सर रिवर्स करके तो माइनस वो कोई प्रॉब्लम नहीं. Try to convert this in terms of temperature. Observe the process 2 to 3. It is a polytropic process. For a polytropic process, P3 by P2 can be written as T3 by T2 power n by n minus 1. If it is adiabatic, it will be gamma by gamma. ध्यान से सुनो सर. सर आपने gamma minus 1 by gamma लिखा था. अगर आपको टेम्परेचर का रेशियो चाहिए, इफ यू वांट टेम्परेचर रेशियो, इट विल बी प्रेशर रेशियो बाय गामा माइनस 1 by gamma. But I want the pressure ratio, it will be n by n minus 1. So this can also be written as, what is T3? Already T3 is T1 by T2 power n by n minus 1. So therefore R ln P3 by P2. What is P3 by P2? T1 by T2 power T1 by T2 power n over n minus 1. Absolutely, ये power है सर. तो ये power will jump down. So entropy change for second process is given by Cp ln T1 by T2 minus R into n. ये jump करेगा, ये power है सर, into नहीं, ये power है, by n minus 1 ln T1 by T2. Absolutely fine. मेरे प्यारे दोस्तों, if you see the left hand side, मतलब ये वाला, it is T2 by T1. इसको भी T2 by T1 के फॉर्म में लाना. तो कैन आई राइट लाइक दिस सर? मेरे प्यारे दोस्तों, इसको माइनस Cp ln T2 by T1. अरे यार, आई वांट T2 by T1. सो अगर ये भी T2 by T1 माइनस होगा, माइनस ऑफ माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, अगर ये ऊपर जाएगा सो लॉग ऑफ उल्टा क्या होगा? माइनस. तो ये होगा प्लस Rn by n minus 1 ln T2 by T1. Excellent sir. This is the entropy change for second process and that is the entropy change for first process. But clearly he said both entropy changes are same. Equate karo sir. Now equate Cp ln T2 by T1. Cp ln T2 by T1 is equal to minus Cp ln. This is delta S1. It is given that delta S1 is delta S2. ln T2 by T1. Plus nr by n minus 1 ln T2 by T1. Excellent sirs. So I think we can cancel out ln T2 by T1, ln T2 by T1, ln T2 by T1. हम cancel करेंगे और यहाँ पे मैं ये हटा दे रहा हूँ सर. Now you have Cp is equal to minus Cp, ठीक है, plus nr by n minus 1. तो bring this Cp this side. 2Cp is equal to nr by n minus 1. Okay, sir ji. Okay, no problem at all. No problem at all. So now, so क्या करेंगे sir? The answer is asked in terms of n and gamma. So you need to eliminate Cp.
तो क्या होगा सर? Cp इज गामा आर बाई गामा माइनस वन, एन आर बाई एन माइनस वन, आर इज गॉन, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 गामा बाई गामा माइनस वन इज एन बाई एन माइनस वन. इसको उल्टा करो, क्या होगा? गामा, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट एन ना, इसलिए मैं उल्टा कर रहा हूं. सो क्या होगा सर? एन माइनस वन बाई एन, तो इट विल बी गामा माइनस वन बाई टू गामा इज इक्वल टू एन बाई एन इज वन माइनस वन बाई एन. एब्सोल्युटली फाइन सर. सभी लोगों को समझ में आ रहा है सर? थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज रेगुलर क्लास में आई विल बी वेरी स्लो, बिकॉज ये तो रिवीजन क्लास है. ठीक है सर. सो इट विल बी गामा माइनस वन बाई टू गामा इज इक्वल टू, तो वन बाई एन, ऐसा करो सर. देखो, 1 by n, you bring 1 by n to this side, is equal to 1 minus gamma minus 1 by 2 gamma. So therefore 1 by n is equal to 2 gamma minus gamma plus 1. 2 gamma minus gamma plus 1 by 2 gamma. 2 gamma minus gamma is gamma plus 1 by 2 gamma. It is 1 by n, but I don't want 1 by n, I want n. So n will be equal to ulta 2 gamma by gamma plus 1. Is it correct, sir? Bolo sir ji. Is the question clear? Is the question clear? Is the question clear? Is the question clear? Yes or no? Yes, yes, yes. Wonderful, sirs. Wonderful, sirs. Wonderful. ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए. सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. कम ऑन. डॉक्टर हिमेश है वो, हिमेश शर्मा डॉक्टर है वो, पीएचडी कर दिया वो पीएचडी कर दिया डॉक्टर हिमेश. ये वाला क्वेश्चन पढ़ो. An ideal gas is known to obey the following relation. U is 290 plus 0.918T. देखो, U is given as 290 plus a simple question है सर, 0.918T. ठीक है. And PV is given as, देखो एक बार, PV is given as 0.287 into T plus 273. ठीक है सर. Where U is specific internal energy in kilojoule per kg and T is the temperature in degree centigrade, P is the pressure in kilopascal, V is the specific volume in meter cube per kg. Which of the following statements are true? The specific heat at constant pressure, it is MSQ. Specific heat at constant volume. He is asking Cp and Cv. कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर. सुनिए सौरव, रटो मत आप, ध्यान से सुनो. When I was teaching you last chapter, that is thermodynamic relations, I gave you Cv is equal to dou U by dou T at constant volume and Cp is equal to dou H by dou T at constant pressure. बोला था नहीं बोला सर? बोला था नहीं? du is equal to Cv dt, dh is equal to Cp dt. ये भी ना यार, अरे यार, Cv is equal to du is equal to Cv dt. तो Cv क्या होगा सर? du by dt, but at constant volume, इसलिए पार्शियल आ गया. Similarly, dh is equal to Cp dt. What is Cp? dh by dt. That's it. इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? Why are you getting confused? I don't understand. क्या कंफ्यूज? अरे गया, अंडू करेंगे इसको, अंडू ऐसा करते ना, बहुत बढ़िया सर. अब देखो ना, देखिए सर, नाउ हियर U is given as, अरे अल्लाह, हाँ हाँ जी सर, U is given as 290 plus 0.918T, 0.918T. तो what is dou U by dou T sir? It is your Cv. डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0. You are differentiating with respect to T, तो 0.918 T का differentiation 1 है, so this will be 0.918. तो Cv value is 0.918. देखो, so specific heat at constant volume is 0.918. Third one is correct. Is it correct, sir? Third one is correct. Yes, sir.
वेरी गुड. लेट्स सी व्हाट इज. और एक बात है सर, आई नो internal energy, I know PV. Can I find out enthalpy? Yes, sir. Why not? H is equal to U plus PV. Sir, why are you writing all small? Because he has given specific quantities. So H is equal to U तो already दिया है sir. 290 plus 0.918 T PV. What is PV? 0.287 into T plus 273. This is H. I want Cp. What is Cp? dH by dt. You differentiate this enthalpy with respect to temperature. खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया. अरे ये क्या हो रहा है सर? हाँ, पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. होगा, कोई डरने की बात नहीं है, फिर वो ही कर रहा है ये. चलो कोई बात नहीं. तो एंथैल्पी इज इक्वल टू स्मॉल h is equal to 290 plus 0.918 T plus 0.287 T plus 273 exactly. So dH by dt is equal to, ये तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यू डिफरेंशिएट तो ये 0.918 होगा प्लस 0.287 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ T इज 1 एंड 273 का जीरो है तो कितना होगा सर? 0.918 प्लस 0.287. 0.918 प्लस 0.287. तो हाउ मच इज दिस सर? 15 0 1 9 10 12. आई थिंक 1.205 आ रहा है ना सर? इज इट 1.205? इज इट 1.205? ओनली आशीष सिंह हैज गिवन तो 1.205. तो 2 and 3 are right. It is MSQ question. बोलो सर जी. वेरी गुड. अब देखो नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सोचो सर. ये मैं करेगा, आप देखते बैठो. पढ़ो पढ़ो रे, पढ़ो मेरे प्यारे बंधुओं. क्या बोला सर? इन दिस क्वेश्चन आर इज पॉइंट देन वी नॉट यूज आइडियल गैस प्रॉपर्टी. मेरे प्यारे दोस्तों, आर को देखकर आइडियल गैस मत बोलना सर. एवरी गैस हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. A gas can be treated as an ideal gas when the pressure is low and the temperature is high. Conditions पे डिपेंड करेगा. R को देकर 0.287 आइडियल गैस, 0.287 आइडियल गैस, ऐसा मत बोलो सर कृपया. इधर दर्द देता है सर. चलो कोई बात नहीं. मजा आ रहा है सर. हम भी YouTube पे आएंगे अब. आऊं? रेयरली आई कम सर, रेयरली आई कम. पढ़ो सर, पढ़ो ये थोड़ा ये नियॉन हैज मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन. यहां से यहां लिखूंगा सर. मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन एज 20.183. द critical temperature is the critical temperature is 44.5. The critical pressure is चंदन है आप 2.73 megapascal and the it is meter cube. It is meter cube. The critical no. The critical temperature, pressure, the critical temperature, pressure and specific volume are given. How much is that? 0.0416 meter cube per kilomole. Please my dear students, थोड़ा देखना सर, थोड़ा देखना सर. दिस इज मोलार सर. ये मोलार क्वांटिटीज है सर. व्हेनेवर इट इज गिवन तो जनरली मोलार के लिए मैं बार लिखता हूं सर. ऊपर नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. रीडिंग फ्रॉम अ कंप्रेसिबिलिटी चार्ट फॉर अ रिड्यूस प्रेशर ऑफ. देखो द रिड्यूस, मैं बताता हूं, डोंट वरी. द रिड्यूस्ड प्रेशर इज 2 and the reduced temperature is 1.3 and the compressibility factor is 0.7. ध्यान से सुनो सर, I will explain clearly.
द करस्पॉन्डिंग रिड्यूस्ड वॉल्यूम इज, सुनो केयरफुली मेरे प्यारे दोस्तों, व्हेन आई से reduced quantity, it is a dimensionless quantity. What is that? It is the actual pressure by critical pressure. The reduced temperature is, ये तो dimensionless होगा. Reduced quantities are dimensionless. Pressure by pressure dimensionless. Same kilopascal, same kilopascal. Reduced temperature is actual temperature by critical temperature. The reduced specific volume is actual volume by क्या है? Critical volume. ठीक है सर. And you know very well, PV is equal to MRT, or the same equation can be written as PV is NR bar T. ठीक है सर, ध्यान से सुनो सर. तो PV by NR bar T is known as compressibility factor. Is not, or here I can write PV by MRT is equal to Z is known as compressibility factor. Compressibility factor. ठीक है सर. Now, what is the compressibility factor for ideal gas? Please look at sir, ये किसके equations है सर? ये सिर्फ आइडियल गैस के इक्वेशंस है सर. वन इज इन मास फॉर्म, अदर इज इन मोलार फॉर्म. तो व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस? देखो एक बार, Z इज PV बाय MRT, बट आइडियल गैस के लिए PV क्या होता है सर? MRT. MRT बाय MRT 1 होगा. सिमिलरली PV बाय NR बार T, सो आइडियल गैस के लिए PV क्या होता है? NR बार T. NR बार T बाय NR बार T 1. सो Z, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज 1. ठीक है सर. ठीक है, is it okay sir? Now the compressibility factor can be more than 1, the compressibility factor can be less than 1 if it is non-ideal gas. So here the compressibility factor is given as 0.7. It means it is not an ideal gas. ठीक है सर, सुनो केयरफुली. तो इसको हम हटा देंगे सर. ठीक है. नाउ सुनो सर, आप कुछ मत करना सर. क्या दिया सर? Critical temperature is 44.45 and the reduced temperature is 1.3. Reduced temperature is given, देखो, the critical reduced temperature कितना दिया सर? Reduced 1.3. तो TR is given as 1.3. T by what is the critical temperature given sir? The critical temperature is 44.5 Kelvin. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर सर? मुझे थोड़ा वैल्यूज दीजिए सर, फटाफट मुझे थोड़ा वैल्यूज दीजिए. सो द एक्चुअल टेम्परेचर इज 57.85 केल्विन. क्या ये क्लियर है सर? इज इट ओके सर? अरे कोई है क्लास में? कोई है क्लास में? मेरे प्यारे दोस्तों, कोई है क्लास में? नो वन इज कॉमेंटिंग. है? वेरी गुड. इधर देखो. सिमिलरली व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्रेशर गिवन सर? 2 दिया है सर. द रिड्यूस्ड प्रेशर इज गिवन एज 2. P by what is the critical pressure? The critical pressure is 2.73 megapascal. 2.73 megapascal. Generally you have to keep it in kilopascal. So what is the actual pressure? ये multiply करो 2 into this. It is 5.46 megapascal. I can also write this as 5460 kilopascal because megapascal को, because R is in kilojoule per kg Kelvin और R bar is kilojoule per kilomole Kelvin है, तो इसलिए किलोजूल को मैच करने के लिए I am keeping the pressure in kilopascal. ठीक है सर. अभी क्या करना है सर? अभी क्या करना है सर? He is asking reduced volume. तो for finding out reduced volume, I need V, I need VCR. Already VCR is given. Somehow if you calculate the actual volume, the problem is solved. So कहां से आएगा सर actual volume? इधर देखो, PV by NR bar T is compressibility factor. मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखो, यहां पे पर मोल दिया है, इसका वैल्यू दिया है सर प्रॉब्लम में. It is per mole. See the question. See this question. It is meter cube per kg mole.
इसीलिए यहां पे मीटर क्यूब पर केजी मोल, तो ये वैल्यू दिया है। सो दिस कैन बी रिटन एज, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, सो वी, ये स्मॉल वी लिखेंगे सर, ये स्मॉल वी बाई आर बार टी इज इक्वल टू जेड, द एक्चुअल प्रेशर इज नोन। R bar, universal gas constant. Why are you taking R bar, sir? Because here per mole is given. That's why I have taken universal gas constant. Answer mole में है, इसलिए मैं मोलार गैस कांस्टेंट लिया सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिया। सर सभी लोगों को समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी, आर यू फॉलोइंग? क्या ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है सर? अगर नहीं आ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर कुछ तो बोलो सर, कुछ तो बोलो सर, कुछ तो बोलो सर। यस यस यस, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ललित आ गया ना, बहुत मजा। तो देखो, देखो P, व्हाट इज द प्रेशर? देखो सर, why are you keeping the pressure in kilopascal? Because R is 8.314 किलोजूल पर किलोमोल केल्विन। तो किलोजूल में जब है तो ये किलो पास्कल में रखना जरूरी है। तो P is 5460, V I do not know, R is 8.314, why are you not taking 0.287? अरे नमूने, ये एयर नहीं है रे, कोई अदर गैस है, और आर बार है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये मोलार वॉल्यूम है, इसलिए मैं आर बार लिया। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर सर? इट इज 57.85। तो व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम? कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम? मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल वॉल्यूम कितना है सर? नो वन इज गिविंग सर। हो गया, आप नहीं दे रहे सर, मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं सर, आप नहीं दे रहे, नो वन इज गिविंग द आंसर। 1.48। अच्छा, मुझे इसका वैल्यू, मिस्टर जेम्स, आई वांट दिस वैल्यू, यू आर राइट, बट आई वांट दिस वैल्यू। दिस इज इक्वल टू द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू कितना है सर? व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? दिस पीवी बाई आर टी इज जेड, जेड इज गिवन एज 0.7, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज गिवन एज 0.7, मुझे v का वैल्यू दीजिए। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट इज गिवन, कितना है सर ये? अरे z का वैल्यू रे, यस 0.0, गलत आंसर मत देना सर, 0.06166 हो गया। ही इज, मिस्टर जेम्स इज करेक्ट, ही इज आस्किंग रिड्यूस्ड वॉल्यूम। तो रिड्यूस वॉल्यूम इज एक्चुअल वॉल्यूम बाई क्रिटिकल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम इज 0.06166 बाई क्रिटिकल वॉल्यूम। ऑलरेडी क्रिटिकल वॉल्यूम इज नोन, क्रिटिकल वॉल्यूम इज 0.0416, तो 0.0416 कितना आ रहा है सर ये? रिड्यूस्ड क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं रहता है। व्हाट इज द वैल्यू सर? एनीवन? आई गॉट द वैल्यू एज, इज इट करेक्ट? कुछ तो बोलो सर, कुछ तो बोलो सर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर सर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर सर? अगर यस बोलते तो मैं आगे बढ़ूंगा सर, अगर आप यस बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर से समथिंग, से समथिंग। अच्छा, जनरली द वेरिएशन इज लाइक दिस, तो ये दिया है सर, हाँ देखो इधर। सो एक्चुअली आवर वैल्यूज आर दिस, तो इसका कोई रोल ही नहीं है यहां पे, जस्ट इट इज गिवन, ठीक है। क्लियर हुआ सर क्वेश्चन? क्लियर हुआ सर क्वेश्चन? मजा मजा। सौरभ, रीड दिस क्वेश्चन सर। दिख रहा है सर आपको? हाँ, चलो पढ़ो।
पढ़ो। अरे हिमेश, हाउ आर यू सर, कैसे है सर, ये क्या होता है रे? क्लास चल रहा है, क्लास पे फोकस करो, ये सब बातें बाद में करेंगे। आई डोंट लाइक दिस। ये क्या है हाउ आर यू? क्या खैरियत पूछने के लिए आए? हम पढ़ने के लिए आए? अरे कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहा है, तू फोकस कर पढ़ाई पे। मेरा काम है आपको पढ़ाना और जाना है। सॉरी, अब बुरा मत मानना। टेक दिस। ये फोकस करना सर। 1 mole of an ideal gas in initial state A undergoes a cyclic process A, B, C, A. Its pressure at A is P naught. देखो, pressure at A is P naught. ठीक है सर। Choose the correct options from the following. Again, it is MSQ. Again, it is MSQ. सर अब देखो धीरे से, स्लोली, अभी 3-4 क्वेश्चन होने के बाद आई एम श्योर दैट दिस सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू। पूरे पूरे ओपन अप हो जाएंगे सर, सारे एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी, सारे सारे पढ़ेंगे। नो, मेरा एक सवाल आंसर करो सर। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर सर? इट इज अ 3 प्रोसेस साइकिल। AB is one process, BC is another process, CA is the third process. ठीक है सर। What is AB process सर? देखो एनीवन, इस एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। एवरीवेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कैन आई से AB इज isothermal? Can I say AB is isothermal? Absolutely correct, sir. Absolutely correct. And what is AC or CA? CA क्या है सर, बोलिए। और along CA क्या कांस्टेंट है सर? वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम। देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, एवरीवेयर CA पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है सर। नाउ व्हाट अबाउट, अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये पता ही नहीं यार, कुछ भी हो रहा है ये। कौन तो ब्लैक मैजिक कर रहा है सर, मुझे पता है, करने वाला भी कौन है पता है मुझे। व्हाट इज द प्रेशर एट ए? इसलिए हमारा सेशन का लिंक ही गायब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, दिल के सच्चे है तो क्या होगा। हाँ, देर इज अ प्रोसेस ए बी, देर इज अ प्रोसेस बी सी, देर इज अ प्रोसेस सी ए। ए बी इज व्हाट प्रोसेस सर? मेरे प्यारे, व्हाट इज ए बी? आइसोथर्मल, बिकॉज इस एक्सिस पे टेम्परेचर है। एंड बीसी, कैन यू टेल मी, अगर क्लास में कोई बताते बीसी प्रोसेस क्या है, मैं चॉकलेट। व्हाट इज सीए प्रोसेस सर? एवरीवेयर सीए पे, सीए पे एवरीवेयर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या आप बताएंगे बीसी क्या प्रोसेस है सर? Can you tell me what is BC process? Chocolate मिलेगा. It is a straight line passing through origin. It is a straight line passing through origin. Someone, पंकज ने बोला आइसोबारिक। एक बार देखो सर, ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये टेम्परेचर एक्सिस है। ये V नॉट है, ये 4V नॉट है सर। ठीक है सर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बी से लेकर सी तक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सो कैन आई राइट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन मींस y इज इक्वल टू mx? 100% सर। ये कौन सा गैस है सर? आइडियल गैस है, तो pv इज इक्वल टू mrt। व्हाट डू यू हैव ऑन y एक्सिस? y एक्सिस पे v है, देखो y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे t है। इट इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। तो क्या होगा सर? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? यस सर। तो व्हाट डज स्ट्रेट लाइन मीन? स्लोप कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू mx, ऑन दिस एक्सिस यू हैव टेम्परेचर, तो y इज mx, इस एक्सिस पे टेम्परेचर है,
और इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, y इज इक्वल टू एम एक्स, दिस इज द स्लोप। बट ये तो स्ट्रेट लाइन है सर, वेन एवर इट इज अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज कांस्टेंट। मुझे बताइए ये स्लोप कब कांस्टेंट होगा सर? व्हेन विल द स्लोप बी कांस्टेंट? mr by p, mass is already constant, r is already constant, this will be constant provided p is constant. So therefore this process bc is a constant pressure process. My dear students, have you understood this? Have you understood, my dear students? ओके ओके, आ गया सर। अब सुनो केयरफुली, यहां तक आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम, आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम, वी हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब देखो सर क्या बोल रहा है सर, इट इज एन आइडियल गैस, अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। एक बार देखो व्हाट इज ए बी सर, मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज ए बी? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए कैन आई राइट ए बी इज आइसोथर्मल, P1 V1 is equal to P2 V2 means PAVA is equal to PBVB because A to B is isothermal. A to B is isothermal. Excellent, sir. What is PA? PA is P naught. What is VA? VA. P देखो PA VA. VA is V naught is equal to PB. I do not know, sir. VB. What is the volume at B? What is the volume at B? What is the volume at B? 4 V naught. So V naught कट गया, तो PB is equal to P naught by 4. Is it correct, sir? PB is equal to P naught by 4. Is it correct or wrong, sir? क्या ये सही है या गलत है, सर? सर आप कुछ तो बोलो सर, आप कुछ तो बोलो सर। बाबा हिमेश कुछ तो बोलो। एल्लाजा क्या है? एल्टाजा। बहुत बढ़िया सर, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। सो यू टेल मी what is the pressure at C? You know that BC is a constant pressure process. When the pressure is constant, PB and PC is same, P naught by 4. So pressure at C is P naught by 4. 100% option C is correct. और एक बात है, internal energy at A and B are same. Do you agree? Internal energy at B and C, देखो A and B are same. Do you agree with this? How many of you agree that internal energy at A and B are same? Internal energy at A and B are same. मैं agree करूंगा सर। Why? For an ideal gas, internal energy is a function of temperature. So temperature at A and temperature at B, it is same because AB is isothermal process. When the temperature is constant, internal energy is constant. मतलब from A to B, internal energy of A is equal to internal energy of B because A to B is isothermal. तो ये भी सही है रे बाबा, ठीक है। Now work done by gas in the process AB, कहां गए रे? AB process में वर्क पूछा है। AB is isothermal. What is isothermal work, sir? P initial V initial ln V final by V initial, ये वर्क का इक्वेशन है सर। और यू कैन ऑल्सो राइट P final V final ln VF by VA because for isothermal P1 V1 is P2 V2, P initial V initial is P final V final. Exactly, sir. देखो A to B is isothermal. What is? देखो ध्यान से देखो सर, और PI सुनो रे, कुछ समझ में आ रहा है सर? इधर देखो PI, what is the pressure at A? What is the pressure at A? It is P naught. What is volume at A? V naught. Exactly. VI initial isothermal का initial ये है सर, यहां से शुरू हो रहा है। So what is the pressure at A? Already pressure at A is given as P naught. Okay. And what is the volume at A? It is V naught. ln V final by initial. यहां से यहां तक isothermal है सर। What is the initial volume? V naught. What is the final volume? 4 V naught. So final volume is 4 V naught by initial volume is V naught. तो ये कट गया, तो P naught V naught ln 4 is the work. ये भी सही है सर, ये भी सही है सर। Temperature at C is T naught by 4. How to calculate temperature at C? Anyone in the class? How can I calculate temperature at C, sir? How can I calculate temperature at कहां पे? At C. Anyone in the class? Hint दीजिए सर। How to calculate temperature at C? B सही है सर, B ऑलरेडी सही है। Temperature at C मैं बोल रहा हूं सर, A to B is a constant volume process. ठीक है,
क्या करेंगे सर? ए टू बी इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो ए टू सॉरी सी ए, आई एम सॉरी, ये प्रोसेस ऐसा है, सी ए इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. Whenever the volume is constant, PV is MRT, volume is constant, mass is constant, R is constant, pressure is directly proportional to temperature. तो C से A तक pressure is proportional to temperature. तो can I write PC by TC is equal to PA by TA? Yes sir. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नहीं आ रहा है आपको, दोबारा बता रहा हूं सर, एक सेकेंड. फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ऐसा लिख सकता हूं सर, PC by PA is equal to TC by TA. What is PC? Already PC is known to me as P0 by 4. PC हो गया PA. What is PA? Already PA, pressure at A is P0. ठीक है सर. Should be equal to TC, मुझे पता नहीं सर, by TA. What is TA? What is TA? Temperature at A is, देखो A का टेम्परेचर है T0, ये कट गया, तो TC इज इक्वल टू ये T0 को इधर लाना, इट इज T0 by 4. मतलब ये भी सही है सर. सो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. वाह, एनोनिमस ने ABCD ऑल आर करेक्ट. बहुत बढ़िया रे. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को समझ में आया सर? कुछ तो बोलो सर, कुछ तो बोलो सर. बहुत बढ़िया. ये वाला लीजिए सर, अ सिंपल क्वेश्चन. कहां गया रे? हाँ जी सर, कहां गया रे, कहां गया रे? हाँ. A gas expands according to the relation PV power N is constant from initial state P1 V1 to the final state. देखो, अच्छा क्वेश्चन है, not that great but okay type. अब आएगा सर, धीरे धीरे थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करो. ठीक है. नाउ क्या बोला है सर? A gas is expanding from P1 V1 state to final volume V2. मतलब इनिशियल वॉल्यूम ये ले लेंगे एंड फाइनल वॉल्यूम ये ले लेंगे सर. ठीक है सर. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वर्क इज ऑब्टेन्ड फॉर, याद है सर आपको? व्हेन आई गेव यू ग्राफ्स इन माय रेगुलर क्लासेस, कुछ ऐसा दिया था सर. एनी एक्सपेंशन है सर, डिस्प्लेसमेंट वर्क. हाउ डू यू नो इट इज एक्सपेंशन सर? Initial volume is V1, final volume is twice the initial volume. So volume is increasing, it means it is expansion. ठीक है सर? ओके राइट. अब देखो, आप बताइए सर, N is 0, N is 1, N is increasing, तो उसके बाद क्या होगा? N is let us say 1.4, उसके बाद हाँ N is let us say 1.6 something, उसके बाद N इज इक्वल टू इनफाइनाइट. याद है सर आपको? याद है सर? यस. तो N का वैल्यू 0 मींस इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सो N 0 ये है. ठीक है सर, मैं यहां पे लिखता हूं, एक सेकंड. The initial pressure is P1. Okay. N0 means it is a constant pressure process. Excellent, sirs. N is equal to 1. Because it is expanding to a final volume of this. N is 1.4. प्रॉब्लम क्या है? n इज इक्वल टू -1. कैसे करें सर? मेरे प्यारे दोस्तों, एवरी प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय PV पावर n इज कांस्टेंट. यस सर.
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n गिवन सर? -1. pv पावर -1 इज कांस्टेंट. इसका मतलब p बाई v इज इक्वल टू c और p इज इक्वल टू cv. सो ये प्रोसेस, दोबारा बता रहा हूं, every process can be represented as p per n is constant. Here n is given as -1, pv per -1. तो p by v, v per -1 तो by v is c. तो p is equal to cv. ध्यान से सुनो सर, c is constant, power of p, power of v, दोनों का पावर 1 है तो लीनियर वेरी होगा. इफ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर हाउ इज इट वेरिंग? लीनियरली. तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो कहां तक जाना चाहिए सर? इधर देखो, कहां तक जाना चाहिए सर? फाइनल वॉल्यूम, उसको उधर जाना चाहिए. ये मेरा देखो, ये स्ट्रेट लाइन होगा सर, ये स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज, फॉर दिस n इज इक्वल टू -1. होप यू अंडरस्टूड. क्या ये समझ में आया सर? देखो, p इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल v, तो लीनियर है सर. सो जब प्रेशर बढ़ रहा है, एक्चुअली इन द प्रॉब्लम वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम v1 टू v2. जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, बिकॉज द रिलेशनशिप इज लीनियर. नाउ यू टेल मी, किसमें वर्क ज्यादा होगा सर? किसमें वर्क ज्यादा होगा सर? किसमें वर्क ज्यादा होगा सर? एनीवन? Anyone? Simple area. For this, the area is below this. 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 Which one has more work? देखो, इसका एरिया कम है, इसका थोड़ा इससे ज्यादा है. This area is इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है. Because if you want the area, this will give me work. So maximum किस में आ रहा है सर? n is equal to -1. Is the question clear sir? चंदन? Yes sir. ये वाला करो. Come on, do it. Read the question. Please read the question. Read the question. Come on, read the question. चलो चलो पढ़ो. Let me do this. All of you, are you there? All of you, are you there? I'll give you break at about 4:40. वैसा मैं break दे दूंगा. Is it okay? हाँ, easy था लेकिन ठीक था सर. बहुत बढ़िया ललित. तो आपको जब ब्रेक चाहिए बता देना, लेकिन ब्रेक लेते हुए वॉच भी ला लिया मैं. देखो, अच्छा सवाल है सर. When the outside temperature is -10, surrounding temperature is -10. A residential heat pump provides 3.5 into 10⁶ kilojoule per day to a dwelling. Dwell का मतलब जहां पे हम रहते हैं. Where do you dwell? कहां पे? ये मेरा घर है. It is my dwelling. मैं ये घर में हूं. Okay. To maintain a temperature of 20 degrees centigrade. Let me repeat sir. बाहर का तापमान है -10 degrees centigrade. The outside temperature is -10. And you know that human body is not comfortable at -10. So therefore we are maintaining a temperature of 20 in our room. How? By pumping heat. So it is the question of heat pump. ठीक है sir. Now, okay. If the electricity costs 5 rupees per kilowatt hour, 1 kilowatt hour is costing 5 rupees. The minimum cost required in rupees is, I have a question sir. Minimum cost कब होगा सर? अरे रे रे, यस गया सर. आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सर. माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ सर. प्लीज सर माफ करो, माफ करो सर, माफ करो सर, माफ करो. 21 रुपीज पे ही आ रहा है सर.
₹579 साउंड लो होगा अभी। ठीक है सर, अभी साउंड ठीक है, अभी साउंड ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, मिनिमम पैसे कब लगेंगे? when the electrical consumption is minimum, means work input is minimum. Can you tell me, for work absorbing device, when do you expect the work input to be minimum? when it operates on a reversible mode. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, यस। अब देखो सर, मैं बताता हूं, सुनो केयरफुली। ये मेरा घर है and I have to maintain 20 डिग्री सेंटीग्रेड by supplying heat। कितना हीट सप्लाई कर रहा है सर वो? 3.6 इंटू 10⁵। एक बार देखना सर, 3.5 इंटू 10⁶ किलो जूल। ऑल आर, ध्यान से सुनो, पर डे कैलकुलेशन। Let me make all calculations per day because he has given everything per day. हम per day का ही calculate करेंगे सर। Will it be fine? We'll calculate per day only. ठीक है सर। Now, the surrounding temperature is -10. This is a heat pump and we are supplying the energy input. And where from it is taken? From the surroundings. What is the temperature of surroundings, sir? I think it is -10. Let me check once. -10, 20. ठीक है सर, -10. Okay, let us write this as higher temperature. So this is my 293 Kelvin. Absolutely fine. And what is this temperature, sir? Lower temperature. ये कितना है सर? 263 Kelvin. Is it correct or wrong? Correct or wrong? Should be correct. अब देखो, as it is a reversible device. Why is it reversible device? He is asking minimum. ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है सर। Let me calculate COP of a heat pump. It can be written as Q2 by W because for a heat pump, higher temperature is the desired. So it is the desired effect by energy input. Very good, sir. Now, we can also write the COP of heat pump as T higher by T higher minus T lower. Okay, sir. So it is a heat pump. So what is the higher temperature? 293. What is the lower temperature? 263. So T higher minus T lower. So please give me the COP of this heat pump. आप ready, sir? इसलिए मैं बोला calculators ready रखो, बोला मैं। That's why I asked you to keep calculators ready. लेकिन आप नहीं सुनते क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिंदगी में। 9 पॉइंट कितना आ रहा है रे? ठीक है सर, इधर आइए सर। 9.766 is equal to Q2 by W. What is Q2, sir? What is Q2? We are supplying 3.6 into 10⁶ kilojoule per day. ये kilojoule per day है sir. So by W. Can you give me what is the work input? It is actually this work is coming from electrical consumption. कितना work input है sir? कितना work input है? If I do this, I am getting this as 358,364.2 kilojoule per day. Is this correct or wrong, sir? एक बार चेक कर लेना, is the value correct or wrong? वाह खुर्शीद आलम, वारे वाह खुर्शीद आलम, वारे वाह। देखो ये आ गया सर। नाउ लेट मी रिमूव दिस। So he is asking everything per day only. He is asking everything per day only. देखो, the work input is 358,364.2 kilojoule. It is daily consumption, per day है daily consumption. So we know that the electrical consumption is expressed in kilowatt hour, but this is not in kilowatt hour. कैसे लाऊं सर किलोवाट आवर में? मैं कुछ जुगाड़ करूंगा।
तो इफ यू वांट किलोवाट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ सेकंड, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अब देखो, दिस डेली कंजम्पशन इज 358,364.2 किलोजूल पर सेकंड इज किलोवाट into second. But I don't want kilowatt second, I want kilowatt hour. 1 hour is 3600 second. So 1 second is equal to 1 second is 1 by 3600 hour. So therefore this is 358,364.2 kilowatt second. What is second sir? Hour by 3600. तो ये कितना आ रहा है सर, एक बार बता दीजिए, ये कितना आ रहा है सर? आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 99.5 किलोवाट आवर. एक्सेलेंट सर. बट क्या वो किलो यूनिट्स पूछा है सर? इसका मतलब डेली these many units are consumed, but every unit is costing us 5 rupees. एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 99.5 का कितना होगा? मल्टीप्लाई विथ 5. तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको रुपीस आएगा. कितना आ रहा है रे? 497.5 कुछ ऐसा आ रहा है सर. इज इट करेक्ट? सीएफपी में रेसिप्रोकल करना भूल गया, गोली से उड़ा दूंगा. सब आके भी एग्जाम में गलत करेंगे तो मार्क्स जाएंगे. Is it clear? Anyone got this answer? I think 3 to 4 students got this answer. अच्छा लगा. ठीक है सर. Is it okay सर? हाँ जी सर. ये पढ़ो. अब स्लोली स्लोली, अब स्लोली स्लोली टफ 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 बढ़ेगा सर. अब थोड़ा केयरफुल रहना सर. टेक दिस क्वेश्चन. टेक दिस क्वेश्चन. कम ऑन कम ऑन. टेक दिस क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है सर ये. क्वेश्चन नंबर 10 ना? अरे यार स्लो हो रहा है या सही जा रहा है सर? सही जा रहा है? प्लीज बताइए सही जा रहा है सर? इज इट गोइंग ऑन वेल? बोलो सर जी. It is not milli, it is megapascal. A closed rigid tank, this is the tank fitted with a paddle wheel, contains 0.2 kg of air initially at 350 Kelvin. एक सेकंड सर. पॉइंट एयर है सर. इनिशियल कंडीशंस. एयर इनिशियल क्या है सर? इन दिस टैंक you have 0.2 kg of air at 350 Kelvin. 0.2 kg of air at 350 Kelvin. Okay sir. ठीक है. हाँ. And the pressure is 0.2. फौरन आप किलो पास्कल में कन्वर्ट करना सर. I request everyone to convert in kilo pascal. तो 0.2 megapascal into 1000 is 200 kilopascal. So the initial pressure is 200 kilopascal. Okay. The paddle wheel stirs, matlab this motor is running the shaft and shaft is connected to paddle wheel and the paddle wheel is run for 10 minutes. Okay sir ji. It's run for 10 minutes. With the power input varying with time according to W is equal to minus 20t. See, the power input is given as minus 20t. थोड़ा केयरफुल रहो सर.
Please listen carefully. He said it is the power input, means work per unit time. It is W dot, work per unit time, where W, this W is in watt and T is in minute. यहां पे एक मुसीबत आ गया सर. सुनो केयरफुली. Some empirical relation is given. He says this work, this W is in watt, but T is in minute बोला है सर. एक बार दोबारा पढ़ लेना सर. W is minus T, where W, this value is in watt, but T is in minute. The final temperature of A is 1100 Kelvin. The final temperature is 1100 Kelvin. ठीक है सर. Is 1100 Kelvin. Assuming ideal gas behavior, the magnitude of heat transfer is. अच्छा सवाल है सर. देखो कैसे करेंगे सर. फर्स्ट आइडेंटिफाई, क्या मेरा सिस्टम ओपन सिस्टम है या क्लोज्ड सिस्टम है, ये बताओ पहले. इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है सर. नाउ यू नो वेरी वेल he is asking heat transfer. So can I write d dash q is equal to du plus d dash w? 100% लिख सकता हूं सर. ठीक है. Now there is no problem in calculating the internal energy change because the working fluid is air, which can be treated as ideal gas. mcv dt, that is T final minus T initial. I think this equation is clear. Is this okay sir? Yes sir. इधर देखो. तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज द वर्किंग फ्लूइड एयर. यस. मास कितना दिया सर? 0.2. फॉर एयर CV is 0.718 and the final temperature is given to us as 1100 and the initial temperature is 350. So from एक बार यूनिट्स के तरफ ध्यान देना. मास इज इन kg, CV is kilojoule per kg per Kelvin and the difference in temperature is Kelvin. ये कट गया. तो आंसर विल बी इन किलोजूल. कितना आ रहा है सर? व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? एनीवन? एनीवन? अरे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 107.7. वेरी गुड. जो आंसर दे रहा है हैप्पी हूं सर. नाउ सो इफ यू वांट द हीट ट्रांसफर, आई नीड टू फाइंड द वर्क ट्रांसफर. सुनो ध्यान से. Can I write this as power is work per unit time? Yes sir. It is given as minus 20T. सुनो ध्यान से. Is this work on the system or by the system? Paddle wheel work is on the system. That's why he gave this as minus, because time cannot be negative. ये negative में आएगा, इसका मतलब work is done on the system. सुनो carefully. What is the unit of this? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कमिट मिस्टेक विथ यूनिट्स. आई टेल यू वेयर इज दैट. सो दिस इज माय, ये पूरा किसमें दिया सर? ये वॉट में दिया सर. तो अगर मैं dw कैलकुलेट करूंगा तो -20t ये वॉट में आएगा इंटू dt. देखो ये dt, बट ऑलरेडी t किसमें दिया सर? मिनट में दिया. तो आपका आंसर आएगा, इफ आई इंटीग्रेट एंड कैलकुलेट दिस वर्क, आई विल गेट द आंसर इन वॉट मिनट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज दिस इज गिवन इन वॉट, दिस इज टाइम इज गिवन इन मिनट. तो इज इंटीग्रेट करो. ये इफ यू वांट द टोटल वर्क, बिकॉज टोटल वर्क को कहां से इंटीग्रेट करना है? टाइम 0 से लेकर 10 मिनट्स तक. डायरेक्टली मिनट में दिया है, t मिनट में दिया है, t शुड बी टेकन इन मिनट. तो इट इज -20t. एक बार देखो यूनिट वॉट इंटू मिनट, ये वॉट मिनट में आएगा सर. ठीक है. तो इंटीग्रेट करो सर, इट विल बी -20. व्हाट इज t? अरे यार मैं भी पागल हूं. -20t तो dt है ना यहाँ पे? यस dt है. तो -20. व्हाट इज t dt? t स्क्वायर बाई 2. दिस इज t स्क्वायर बाई 2. 0 to 10. तो कितना आ रहा है सर? w इज -10. 20 by 2 is 10. So this is, ये t है सर. 10 square is 100. 100 minus 0 is 100. So this w is equal to
-1000, लेकिन यूनिट देखना, it is watt minute. Minute means 60 second. So therefore, watt can be written as joule per second into, what is joule per second into second. तो second कट गया, ये जूल में आएगा. तो W is equal to -60 into 1000 joule. So 1000 joule can be written as kilojoule. So work is equal to -60 kilojoule. Please tell me, have you understood, sir? Dear students, have you understood this? This is very important, sir. This is very, very important. Is it clear or not clear? This is very important, sir. This is very important यहाँ पे. So, therefore, heat transfer अगर चाहिए तो du plus d dash w. Du is 107.7 and the work is already known, -60. Why the work is taken as minus? Because it is a paddle wheel work done on the system. So you will get the heat transfer as how much, sir? कितना आ रहा है? I think it is 47.7 kilojoule. Is it correct? 100% correct, sir. बोलो बोलो बोलो. Shall I proceed? कुछ तो बोलो, sirs. वेरी गुड क्वेश्चन, सर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर. इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होगा? यूनिट्स में होगा, सर. इट विल बी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम विथ यूनिट्स. शैल आई प्रोसीड? देखो, अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो आप भागेंगे. अगर बिना अच्छे क्वेश्चन से तो एग्जाम नहीं होगा, क्लियर होगा. यस, ये करो. गुड क्वेश्चन अगेन. प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का ले लो, सर. पढ़ो ये क्वेश्चन. A rigid tank of 2 meter cube volume contains 5 kg. ध्यान से सुनो, सर. A rigid tank of 2 meter cube volume contains 5 kg of water as a liquid vapor mixture at a pressure of 400 kilopascal. Let me repeat, sirs. There is a container. In that container, you have liquid vapor mixture. Clearly बोला है, liquid vapor mixture at 400 kilopascal. Very good, sirs. Half of the mass of the saturated liquid is drained out. Originally, in a container, there is liquid, there is vapor, and half of the liquid is removed, drained out. Now he is asking what is the new dryness fraction. देखो एक बार, the final quality मतलब dryness fraction of the mixture is, must question है सर ये. आगे बढ़ेंगे, बोलो सर. देखो, यस, अब मैं करता हूं सर, सुनो केयरफुली. My dear students, can I write the specific volume of the mixture as the specific volume of saturated liquid plus x into Vg minus Vf? 100%, सर. लेकिन Vg minus Vf को हम क्या लिख सकते हैं, सर? अच्छा क्वेश्चन है, सर. Vfg, ठीक है, सर. Because in the question Vfg is given. Okay. But I don't know the specific volume of the mixture. How to find out the specific volume of the mixture? Specific volume is volume by mass. चलो calculate करेंगे. Already the volume is given as 2 and the mass is 5.
So the specific volume is 0.4 meter cube per kg. Mixture specific volume is known. It is 0.4. Am I right, sir? Yes. Is equal to Vf. What is Vf, sir? 0.001004 plus x into VFG. What is VFG? 0.46138. So everything is known except x. Can you tell me what is x? थोड़ा वैल्यू बताओ सर. What is x? कहाँ गया देखो. एक सेकंड मैं निकालता हूँ. पेपर कहाँ रखा मैं? This is question number. Yes. X is point. कितना आ रहा है सर? Anyone? कोई है ही नहीं क्लास में. मैं क्या करूं? मैं अकेला पढ़ूं? What is the value of x? Oh my God. हो गया सर आपका काम. हो गया आपका काम. I want the dryness fraction, sir जी. हे भगवान. x का वैल्यू दीजिए सर. अरे रे 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 क्या हो रहा है सर? व्हाट इज हैपनिंग? आई वांट द वैल्यू ऑफ x. वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर. ऐसा नहीं चलेगा सर. क्लास में है या नहीं है स्टूडेंट्स? ओ हो. मैं जा रहा हूं सर, अब बंद करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कहीं पे तो मिस्टेक तो नहीं किए? बिल्कुल सही है. पॉइंट प्लस यस. कोई तो x का वैल्यू दो रे. ड्राइनेस फ्रैक्शन, इनिशियल ड्राइनेस फ्रैक्शन. हे भगवान. गए काम से. चंदन है क्लास में या नहीं? ललित. अरे कमेंट्स नहीं आ रहे आपके. आई एम अनेबल टू सी योर कमेंट्स. एक बार रिफ्रेश कर दो. पता नहीं यार. हाँ अब आ रहा है. पता नहीं क्या हुआ था. यस, नाउ इट इज करेक्ट. अब आ रहा है सर. अभी यस यस, थैंक यू. अब आ रहा है सर. 0.864 करेक्ट. जीरो करेक्ट सर. 0.864. अब देखो. वेट 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 वेट. यहां से मैं कैसे आगे बढ़ू सर? यहां से मैं कैसे आगे बढ़ू सर? आप बताओ. हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑन? काम करते हैं सर. The total mass of the mixture is known. The dryness fraction is known. Can I find mass of vapor? Yes, sir. If the mass of vapor is known, from the total mass I'll remove. देखो एक बार मैं बताता हूं. The dryness fraction is given as 0.86478. ठीक है सर. The total mass is given as 5 kilogram. Very good, sir. So what is the meaning of dryness fraction? It is the mass of vapor by total mass. This total mass has mass of vapor plus mass of liquid. ठीक है. X is 0.86478 is equal to mass of vapor by total mass. तो can you tell me what is the mass of vapor? यहां से वेपर का मास निकालेंगे सर. 4.324 exactly. So can I find out the mass of liquid? Yes, sir. Out of 5 kg,
4.32 is vapor, so mass of liquid plus mass of vapor is equal to 5 kg. So mass of liquid plus already vapor mass is known, 4.324 is equal to 5. So I will get mass of liquid. So liquid mass will be 0.6760. Exactly, sirs. Exactly, sirs. Now you tell me, out of this mass, how much mass is removed? 0.676. How much mass is removed? तो इसका आधा निकाल दिए सर. What is half? इसका half. देखो, आर यू रिमूविंग मास ऑफ वेपर? नहीं सर, वेपर का जो मास है ना, वो तो उतना ही है सर. वॉट एवर द मास ऑफ वेपर इज देयर, वो उतना ही है. वी आर नॉट रिमूविंग वेपर मास, इट इज एज इट इज. तो व्हाट विल बी द न्यू मास ऑफ लिक्विड? इसका हाफ होगा. व्हाट इज द हाफ ऑफ दिस? 0.3. इसका इससे आधा निकाल दिए तो बचा कितना? आधा. 0.368 आई थिंक. इज इट करेक्ट सर? 0.338 और 338, आई एम सॉरी, 0.338, इसका आधा. तो नाउ यू नो, out of the total this mass of liquid, half is removed, half is left. So now can you calculate the new dryness fraction? Because you have just removed liquid, you are not removing vapor. So therefore now I will calculate the new dryness fraction. It is, what is the total mass sir? Add karo. What is the total mass? The total mass is liquid plus vapor. तो liquid plus vapor ये add करो, कितना आ रहा है? 4.6, कितना आ रहा है रे? 1.662 ना? 4.662, yes. So this is the total mass, and mass of vapor is 4.324 by mass of the mixture is 4.662, and the dryness fraction is 0.927. क्या ये सही है या गलत है सर? वंडरफुल सर. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. बोलो सर से एक बार, कुछ तो बोलो सर जी, कुछ तो बोलो सर जी, कुछ तो बोलो सर जी. अच्छा क्वेश्चन था सर ये. बहुत बढ़िया. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? विथ योर परमिशन, कैन आई मूव? हे भगवान, ये बच्चों को क्या हो रहा है सर? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. ब्रेक चाहिए? चलो ब्रेक ले लेंगे. कितना ले लेंगे सर ब्रेक? एक क्वेश्चन करके ब्रेक ले लेंगे सर. एक क्वेश्चन करके ब्रेक ले लेंगे. एक क्वेश्चन करके ब्रेक ले लेंगे सर. विल डू वन क्वेश्चन एंड विल टेक अ ब्रेक. मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहता है सर, मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि कुछ ना कुछ किए हम. ओके ओके. अच्छा चल रहा है सर. सर अभी खतरनाक क्वेश्चंस करना है सर आगे. एक्सर्जी के, स्प्रिंग के, अनस्टेडी स्टेट के करना है सर. प्लीज, ये पूरा रिहर्सल का है सर. आप देखो, an inventor claims to have developed a power cycle operating between hot and cold reservoirs 6000 and 300 Kelvin, that develops network is equal to multiple, क्या बोला, multiple of amount of energy QC, where QC is heat rejected to the cold reservoir. क्वेश्चन को समझो सर. देखो, there is a source temperature of 6000 Kelvin. This temperature is ये कितना दिया सर? ये वाला नीचे वाला टेम्परेचर कितना दिया सर? 300. देखो 300. Is the question clear sir? Is the question clear sir? तो ये बोल रहा है सर, what is the maximum value of n? मुझे बताइए सर. Indirectly what is he hinting? Indirectly what is he hinting sir?
मुझे n मैक्सिमम चाहिए. n maximum means work maximum. When you want n maximum, work should be maximum. When do you get maximum work? If the cycle is reversible. That's it. Wonderful. मेरे प्यारे दोस्तों, whenever the cycle is reversible, q1 by t1, whenever the cycle is reversible, q1 by t1 is equal to q2 by t2. Correct or not? q1 by t1 is q2 by t2. Yes sir. But एक बार देखना सर, ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है. कैन आई राइट q1 is equal to w plus qc? Yes sir. q1 is equal to, already w is known, nqc plus qc. Yes sir. तो अब यहां पे पुट करना सर. आई थिंक दिस वी कैन राइट इट एज 5. गलत है सर? नो, पागल हूं सर मैं. 20 है सर. सो ये 2 0 गए, 3 1s 3 2s 20. करेक्ट. q1 by 20 is equal to qc, और q1 is equal to 20 qc. So what is q1 sir? What is q1 sir? nqc plus qc is q1 is 20 qc. तो nqc is equal to, nqc is equal to 20 minus qc is 19 qc. ये इधर लेना, तो qc qc कट गया, तो n is equal to 19. Is it okay my dear students? Is it okay my dear students? बहुत बढ़िया. अब जो करने जा रहे हैं सर, अब ध्यान से सुनो सर. ये भी कर लेंगे सर. चाय पी ले. तो वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ, उसके बाद जबरदस्त क्वेश्चंस करेंगे सर. तो ब्रेक कितना ले लेंगे सर? नाउ अकॉर्डिंग टू माय वॉच इट इज 4:39. 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे सर. शैल वी टेक? नहीं सर, 10 मिनट का ले लेंगे सर. 10 इज ओके. So we are meeting at 4:39. ठीक है? ओके ना? ओके, चलो तगड़े क्वेश्चंस करेंगे सर. बहुत बढ़िया रे. थोड़ा ठंडा हो जाएगा माहौल.
वेलकम बैक। आ गए? आ गए सब लोग? क्या 15 कर दो? आ गए सब लोग? ठीक है सर। चलो विल स्टार्ट। टेक दिस क्वेश्चन। अगेन अ गुड क्वेश्चन। अगेन अ गुड क्वेश्चन। देखो, a reversible compression process. Is my voice clear, sir? Is my voice clear? Voice clear है? जेंडर 5G। ठीक है। नाउ अगेन अ गुड क्वेश्चन। This pressure is 500. This is 100. This is 152. This is 20 degrees centigrade. This is 1. This is 3. ठीक है सर। Clear? Okay. A reversible compression process is shown on PV diagram and TS diagram. This is TS diagram and this is PV diagram. What is the change in internal energy? How to proceed for this question? A process is given on PV diagram, a process is given on TS diagram, and he is asking change in internal energy. How to proceed, sir? Bolo, how do we proceed? How do we proceed? I'll tell you. I'll tell you. On PV diagram, you get work. On TS diagram, you get heat transfer because clearly it is given as reversible. So on TS diagram, area under the curve on TS diagram for reversible process is heat transfer, and area under PV diagram will give work transfer. So can I calculate heat and work? Yes, sir. So once heat and work are known, d dash q is equal to du plus d dash w. From this I calculate work. From this I calculate heat, and I can calculate the internal energy change. But there is one small problem here. What is the problem? You should take sign very carefully. कैसे? It is compression. So volume is decreasing from 1 to 2. Is it a positive work or negative work? First you tell me. Is it a positive work or negative work? Someone gave, Prashant gave the answer as कितना दिया है सर? वो कितना दिया प्रशांत का आंसर क्या है सर? 468. एक बार चेक करो दोबारा. I request you people to check. चेक करो एक बार. गलत कर दिया. चेक करते सर. मेरे प्यारे दोस्तों, can I calculate the work? If you want the work, project this on volume axis. Project this on volume axis. This volume is given as 3 and this is given as 6. So you calculate this area. So work is equal to, what is the area? It is a trapezium. Half into sum of the parallel sides. This vertical side is 500 plus this vertical side is 100 into distance between them, area of trapezium. What is the area of trapezium? Half into sum of the parallel sides. This is 500, this is 100 into distance between them, 6 minus 3. So can you give me the value of this work, sir? Anyone? कितना आ रहा है ये वर्क? 900. But according to me, it is minus 900.
According to me, it is minus 100. Yes or no? Why minus, sir? It is compression. It is compression. It is compression. It is compression. Yes. Now, this is TS diagram. So the process is taking place from 1 to 2. Project it here. Project it here. So you calculate this area. This will give me heat transfer. But यहाँ पे एक big mistake करने जा रहा है. क्या कोई बता सकते हैं, sir, what is the mistake? Whenever you go for entropy, temperature should be strictly in Kelvin. So temperature should be strictly in Kelvin. So for 152 degree centigrade का मतलब होता है 425 Kelvin. And 20 degree centigrade का मतलब होता है 293 Kelvin. Please note down that is very, very, very important, sir. खुर्शीद भाई, बहुत बढ़िया. So what is the heat transfer? It is half into area of this trapezium, sum of the parallel sides. This height is 425. Is it 425, sir? Yes. And this height is 293. So it is 425 plus 293 into sum of the parallel sides into distance between them, 3 minus 1. तो कितना आ रहा है सर Q का वैल्यू? Anyone with Q value? Q का वैल्यू कितना आ रहा है सर? 718. Should I take this as plus or minus? Anyone in the class? Should I take this as plus or minus? Center phi z. Should I take this as plus or minus? I'll give you chocolates, sir. आप बताइए. Plus. Why plus? Why plus? Sir, it should be minus because entropy is decreasing from 3 units to 1 unit. Entropy घट रहा है. In a reversible process, when heat is added, entropy increases. In a reversible process, when heat is rejected, entropy decreases. Entropy is decreasing, it means it is a heat rejection, so it is minus. And if you are not taking care of these minute details, reversible compression does not always mean isentropic. बिल्कुल. कौन बोले सर? कौन बोले compression is always isentropic? Did I say that? It may be polytropic compression. समझ में आ रहा है सर? हाँ. Therefore, now you substitute here. Minus 718 is equal to du and the work is minus 900. So यहाँ से you can easily calculate the internal energy change. How much is that internal energy change, sir? कितना आ रहा है सर? How much is that internal energy change? कुछ तो बोलो. One. Very good, sir. 182 is the right answer. This is also a good question, sir. 182. Let's go to the next question. पढ़ो सर जी. Direct question, but possibility है सर इसका. Read the question. Read the question. देखो सर. In a liquid vapor phase change, dP by dt is given. dP by dt at 100 degrees. What is the temperature given, sir? 100 degree means convert in Kelvin. Add 273, it is 373 Kelvin. How much is the value of dP by dt given? 3750 Pascal per Kelvin. ठीक है सर. If the resulting change in specific volume Vg minus Vf, this is Vfg, is equal to 1.672 meter cube per kg. The entropy vaporization HFG means latent heat of vaporization. HFG is asked. How do we do this, sir? इसको कैसे करें सर? I think you know Clausius-Clapeyron equation. देखो क्या है सर? dP by dt is equal to LH by T into Vg minus Vf or Vfg. I think you know this equation. I'm not giving all these equations, but is the equation clear? Yes, खुर्शीद ने सही आंसर दिया. देखो, what is dP by dt? लेकिन यूनिट्स की तरफ ध्यान देना सर. dP by dt is 3750 Pascal per Kelvin.
dP by dt is equal to latent heat by temperature should be in Kelvin. It is 373 Kelvin into VFG. What is VFG? 1.672 meter cube per kg. That kg will go to the top. It is per kg. ठीक है sir. Can you write Pascal as, मेरे प्यारे दोस्तों, Pascal को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखूंगा सर. Pascal I'll write it as Newton per meter square. So this meter square is gone. एक मीटर बचा है यहाँ पे. और Kelvin गया सर. So therefore LH will be equal to 3750 Newton into 373, ठीक है, into 1.672, ठीक है सर. ये एक मीटर बचा है सर यहाँ पे. ये मीटर भी आएगा पर केजी. कैसे पर केजी सर? इधर देखो, 3750 न्यूटन into 373 into 1.672 meter by kg. That is latent heat. So what is Newton meter joule? You will get this in joule per kg, but I want in kilojoule per kg. So you divide this with 1000, so you get kilojoule per kg. कितना आ रहा है सर ये आंसर? Anyone with LH? कितना आ रहा है सर ये LH? Anyone? I think you are getting this as 2338.7 into 10 power 3 joule per kg. But 10 power 3 joule is kilo. Therefore, the answer is 2338.7 kilojoule per kg. Is it correct, sir? Clear? Clear? Chalo. Next question. Next question. Take this. Read this question. Please read this question. Now, a gearbox operating at steady state. The catchword is steady state. Receives, it is not kilonewton, it is kilowatt. It is kilowatt, sirs. यहाँ पे mistake है. It is kilowatt. 0.1 kilowatt along the input shaft. This is the input shaft. And delivers 0.9095 kilowatt. So a gearbox is receiving an input power of 0.1 kilowatt and it is delivering 0.095 kilowatt. ठीक है sir, along the output shaft. The outer surface of the gearbox, this is the outer surface of the gearbox and it is at 50 degrees centigrade. Convert this in Kelvin. So this will be 323 Kelvin. For the gearbox, which of the following statements are true? It is MFQ. Okay, sir? Okay, now, obviously, this much energy is coming, this much is leaving. What is the loss? So heat is generated because of moving parts. So what is the loss? So can I write the loss as 0.1 minus 0.095? So what is the value, sir? 0.1 kilowatt minus. See, if there is no loss, whatever it receives, it delivers the same. I repeat, sir. अगर कोई loss नहीं रहता है, whatever it receives, it delivers. But there is a loss. 0.1 minus 0.095. तो कितना आ रहा है, sir? I think you are getting this as 5 into 10 power minus 3 watt, which is 0.005, kilowatt. ये सब kilowatt में है, sir. All these are in kilowatt, ना? Yes, all these are in kilowatt. So मुझे बताइए, is A correct or B correct? Is A correct or B correct? आप बताइए, is A correct or B correct? Why B? Anonymous said B. Prashant said B. Ashu said B. Why B, sir? What is the statement given? The statement is for the gearbox. He is asking for the gearbox. For the gearbox, it is actually losing.
So for the gearbox, it is minus. So therefore it is minus, sir. It is losing for the gearbox. If the same thing is asked for surroundings, it will be plus. He is asking for the gearbox. ये हो गया sir. What is the next statement? The rate of entropy generation in the gearbox. कैसे करेंगे sir? How do we calculate this? इधर देखो sir. My dear students, this is a gearbox. From the gearbox, there is a heat transfer of 5 into 10 power minus 3, and the temperature of this is 323 Kelvin. Wait, I know that Ts is equal to d dash q by t plus del S generation. ठीक है, sir. Wait. Now let me write this in rated form. What do you mean by rated form? By time. Whenever I write by time, heat transfer per unit time is heat transfer rate. Whenever I write time, it is entropy generation. मैं time rate form में लिख रहा हूं. मेरा सवाल ये है सर, क्या ये इक्वेशन समझ में आया सर? हैव यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन सर? लेट मी राइट सर. कितना आंसर दिया रे? हाँ देखो एक बार. ds, this is in, अरे यार, you know that ds is equal to d dash q by t plus del S generation. But if you want in rated form, divide with time. So when you are dividing with time, it will be dot. When you are dividing with time, it will be dot. That's what I wrote. Now I have a question. The question is, what is the value of this? Look at this catchword. बताइए sir. Anyone in the class? What is the value of this? 0. For steady state, the change in property with time is 0. So therefore, this will be 0. Excellent, sir. Because it is steady. Excellent, sir. D dash Q. For the gearbox, this is minus. So heat is lost. So therefore, it will be minus 3. This value is in kilowatt. This value is in kilowatt by temperature of the gearbox is 323 so many Kelvin. I'm sorry, sir. This is so many Kelvin. And plus entropy generation rate. So this will be 0. So if you want the generation rate, this will be equal to 5 into 10 power minus 3 kilowatt by 323 Kelvin. So answer will be kilowatt per Kelvin. How much is the answer? Anyone? What is the answer? What is the answer? Hey Bhagwan. I think I'm getting this as 1.547 into 10 raised to minus 5 kilowatt per Kelvin. एक बार check करो. 1.57 into, yes, it is C. B and C are correct options. Am I right, sirs? Excellent, excellent. Now, थोड़ा level of questions अब बढ़ेगा, sirs. Now the level will increase. Start करो अब. The level is increasing. Start. पढ़ो, sirs. पढ़ो, sirs. Very, very good question. अब लेवल बढ़ेगा सर. मैं थोड़ा कूलली करूंगा सर. Now I will solve in a very, very cool manner and I request everyone to be very cautious. Please. No one should do, sir. I will do. हम करेंगे sir. Air in a piston cylinder arrangement shown in the figure below is at 200 kilopascal and 300 Kelvin. There is air in the piston cylinder which is at 200 kilopascal and 300 Kelvin. So the initial temperature is given and the initial pressure is given. The initial pressure is 200 kilopascal and temperature is it is 300 Kelvin, 200 kilopascal. बहुत बढ़िया. ठीक है.
अभी क्या दिया सर? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. Air is initially at 200 kilopascal and 300 Kelvin. Very good. And the volume is 0.5 meter cube. The initial volume is 0.5 meter cube. Okay, sir. देखो sir. Now, and one more thing he said is massless. कहाँ गया रे? वो ये नहीं होता, ये सवाल नहीं, ये वाला. हाँ जी सर. हाँ. If the piston is at the stops, look at carefully. If the piston is at the stops, the volume is 1 meter cube and the pressure is and the pressure of 400 Kelvin दिया ना, pressure of 400 kilopascal is required. Okay, I will explain sir. मैं क्वेश्चन को डिटेल वे में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप सुनते जाना. Okay, is required. The air is heated from initial state to 1500 Kelvin by a 1700 Kelvin reservoir. इस रिजर्वायर से एयर को हीट, आई विल एक्सप्लेन सर, डोंट वरी. मैं सारा, लेट मी टेक डेटा फर्स्ट. Assuming the surrounding temperature to be 20 degrees centigrade, the irreversibility of the process is, and he also said the spring is expanding, the spring force is varying linearly. Sir, what is this question? एक बार मैं दोबारा देख लूंगा सर. 1 meter cube, 400 Kelvin, 400 kilopascal. Okay, 1 meter cube, 400 kilopascal. It is heated to, okay, right. Let me explain the question, sir. Please. मैं क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा सर पहले. Okay. These are the stops. And I think there is a spring. Spring है sir. Very good. So the initial temperature is 300 Kelvin and the initial pressure is 200 kilopascal and the initial volume is 0.5. Let me mark this as 1. Look at carefully. We are heating this. When we heat this, slowly the piston will rise. Sir, this is a wonderful question. So many concepts will get opened up in this question. So it's a humble request. I may be taking some time to explain this question, but you should have patience because we have come here to learn. Now we are heating this. So when you heat this, the piston slowly moves up. Now I have a question. Will the pressure of this air, is it air, sir? What air exactly? Will the pressure of air remain constant or change? मेरा क्वेश्चन है सर. Will the pressure of air constant or change? बताओ. I have a question. देखो देखो. Will the pressure of air remain constant or constant? Oh my God. Oh my God. No, 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 no. Same. क्या हो रहा है सर आपको? क्या हो रहा है सर आपको? When you are heating this, it is not a plain piston cylinder arrangement. Had it been a plain piston cylinder arrangement, then the pressure will remain constant. But as we are heating, the gas will expand. When it moves up, the spring is compressed. When the spring is compressed, the spring will start exerting force in the downward direction. So pressure will increase. Because to overcome that, the pressure. किसी ने क्वेश्चंस नहीं किए सर कुछ एग्जाम में? Please be careful, sir. Please be careful, sir. Please be careful. So he said, अब बोला क्या है sir? Now he says, question is very clear. When it is about to touch, अभी touch नहीं किया sir, just about to touch,
The pressure required is 400 and the volume is 1 meter cube. Temperature is not known. Let me repeat, sirs. Let me repeat the question. When you are heating this, the piston is moving up and compressing the spring. When the spring is compressed, the spring will exert a force in downward direction. To resist that downward force, the pressure of this air is increasing. But I don't know this temperature. You may be wondering, sir, he has given the final temperature as 1200 now. It is not that, sir. एक बार सवाल को पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सर. Air in a piston cylinder arrangement shown is at 200 kilopascal 300 Kelvin with a volume of 0.5. If the piston is at the stops, मतलब अभी stops पे लग रहा है, when it is touching the stops, look at carefully, जब वो stops को touch कर रहा है, at that time the pressure is 400 kilopascal and the volume is 1. But is he stopping there? Nah. The air is then heated. What do you mean by then heated? तो यहां आने के बाद और हीट कर रहे हैं. Let me take this as a state 2. और हीट. Sir, this question I am telling you now, 7-8 questions can be discussed in a single question, sir. इसको neglect मत करना, sir. Now, it is further heated, sirs. अब वो stops पे है. Now, this is the situation. And what is the final temperature given, sirs? 1200 Kelvin. And you tell me, once this touches the stops, once this piston touches the stops, will further heating change the volume? No, because already it has touched stops. Now, therefore, it will be, its final volume will be same 1 meter cube only, because already it is just touching. For that, the pressure required is 400. Now, further heating will result. No more movement of the piston because it is touching stops. Therefore, the volume will remain same. क्या यहाँ तक आपको समझ में आया सर? Please tell me, is the sequential process clear? Initially, the temperature is 300. Initially, the pressure is 200. Initially, the volume is 0.5. Now, you are heating. So, when it is about to touch stops, the pressure required is 400. Why the pressure is increasing from 200 to 400? Because the spring is compressed, the spring will exert the force. To overcome that force, the pressure is increasing. And as the piston is moving up, the volume is increasing. So initial volume is 0.5, now this volume is 0.5. I don't know this temperature. From this state, it is heated to a final state of 1200 Kelvin and the volume is not changing further because it is already touching the piston. ये है. तो इस process का irreversibility is asked. Must question है sir. First, what I do is, let me represent this process on PV diagram. Once you represent the process on PV diagram, things will become easy. Please listen carefully. My dear students, is the mass changing? अब बताइए. ये तो closed system है sir. It's a closed system. Mass is not at all changing. My question to you people is, can I, whether it is this mass of air or this mass of air or this mass of air, it is constant. Is the mass of air changing? No. So can I calculate the mass of air? Whether I use this data or this data or this data, all masses are same. So PV is equal to MRT. M will be equal to PV by RT. ठीक है sir. Whenever R is in kilojoule per kg Kelvin, P should be in kilopascal. Let me calculate the mass. देखो इस condition से mass calculate करेंगे. तो mass is equal to P. What is the initial pressure? 200. What is the initial volume? 0.5. It is air. PV by RT. For air, R is 0.287 and the temperature initially it is at 300 Kelvin. So I can easily calculate the mass. तो ये mass आ रहा है sir. This mass is 1.1614 kilogram. Absolutely fine. No problem at all. Now, my dear students, एक बार देखना sir. सुनो carefully. Can I calculate this temperature, sirs? Can I calculate this temperature, sirs? आराम से.
First, let me complete all formalities with respect to processes. Kaise, sir? Equate this mass to this mass. Because it is a closed system, mass is same. So M is equal to PV by RT for state 1, PV by RT for state 2, because mass is same, R तो same है. तो P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Let me complete the problem and you will understand physically what is happening. So what is P1? It is 200. What is V1? 0.5. What is T1? 300. What is P2? He has already given P2 as 400. V2 is given as 1 and T2. Let us check the value. इधर देखो सर, 0.5 into 200 is कितना आएगा सर? 100 आएगा शायद. 100. तो ये 1/3. तो 1/3 means T2 is कितना आ रहा है सर? हाँ, वो कहां से फाइनली कहां तक हीट किया? इधर देखो, इट इज हीटेड फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू 1500 केल्विन. ओहो, यहां पे हम ये 15 लेना है सर, ये 15 लेना है सर. इट इज हीटेड टू 1500. तो हियर द टेम्परेचर इज 1200 केल्विन. तो समझो केयरफुली. हैव यू अंडरस्टूड सर? मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया सर? मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया? इधर देखो, what is physically happening, I'll tell you now. Suno carefully. Initially from temperature T1, pressure 200, volume से heat कर रहे हैं. जब आप heat कर रहे हैं, when it just touches stops, it reaches a temperature of 12. कितना आ रहा है सर? 1200. तो this temperature is 1200. But are you stopping here, sir? क्या आप इस टेम्परेचर पे स्टॉप कर रहे हैं? नहीं. फर्दर यू आर हीटिंग, सो दैट नाउ दिस इज अ कांस्टेंट. ये 2 to 3 इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग. सो यू आर हीटिंग फ्रॉम 1200 to 1500 केल्विन. कहां से हीट करे सर? देयर इज अ रिजर्वायर. उस रिजर्वायर से वी आर सप्लाइंग हीट. द रिजर्वायर टेम्परेचर इज 1700 केल्विन. नाउ वी आर हीटिंग. बहुत बढ़िया सर. So can I represent the process on PV diagram? एक बार देखना सर. So I know all the data. मेरे प्यारे दोस्तों, कहां गए रहे हो सवाल? हाँ, यही है. Yes, I know all the data sir. इधर देखो. What is the initial pressure? It is 200 kilopascal. ठीक है सर. What is pressure P2? It is equal to 400 kilopascal. This volume is given as 0.5 and this volume is given as 1. This is the pressure, this is the final. And he said linear spring hai, तो linearly ही change होगा. The spring is linear, तो pressure volume relationship is linear. ये होगा सर. This is state 1 and this is state 2. अब आप बताओ सर, फ्रॉम स्टेट 2 to स्टेट 3 क्या हो रहा है सर? सब बताओ. इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग. इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग बिकॉज वंस इट रीचेस दिस स्टॉप्स. देखो 1200 रीच हुआ, अब हीट कर रहे हैं. ऑलरेडी इट हैज टचड द स्टॉप, सो फर्दर हीटिंग डज नॉट अल्टर द वॉल्यूम. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम 1200 से लेकर 1500 तक हीट कर रहे हैं. सो यू नो वेरी वेल, PV is equal to MRT. Wait करो sir. Mass is constant, R is constant, volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. As the temperature is increasing, the pressure will also increase. But it is a constant volume process, sir. It is a constant volume process. इधर देखो, इसीलिए यहां से it will be like this, sir. This is constant volume. So I do not know this pressure P3. Excellent, sir. I don't know this pressure P3. Is it okay, sir? मस्त क्वेश्चन है सर. क्या क्लास में कोई बता सकते हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर? हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर P3? आई विल गिव यू चॉकलेट. हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर P3? बोलो सर. सर कुछ अच्छे क्वेश्चन आने के बाद आप भाग जाएंगे. वेरी गुड. 2 to 3 is a constant. 2 to 3
is a constant volume process. So 2 to 3 is a constant volume process. So therefore, P3 by P2 is equal to T3 by T2. Now you may be wondering, sir, ये कहां से आया? इधर देखो, PV is equal to MRT. Volume is constant, mass is constant, R is constant. So therefore, P is proportional to T, means P3 by P2 is P3. I do not know. P2 is already given as 400. If this is in kilopascal, this will also be in kilopascal. Final temperature is 1500 and T2 is 1200, sirs. ये T2 is 1200, T3 is 1500. तो कितना आ रहा है सर? I think P3 can be calculated. 4 ones, 4 threes, 3 ones, 3 fives. So it is 500 kilopascal, sir. Excellent, sirs. यहां तक सबको समझ में आया सर? Till now, is it clear, sir? क्या मस्त क्वेश्चन है सर? If this is clear, I'll proceed. अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. Is it okay, sir जी? Yes. अब क्या करना है सर? If you see the question, पूछा क्या है सर? What is the irreversibility? Oh my God. How to find out the irreversibility, sir? देखो एक बार, देखो. Irreversibility is equal to T naught into entropy generation. Is it correct or wrong, sir? Is it correct or wrong, sir? Irreversibility is T naught into entropy generation. So already the surrounding temperature is given. T naught is surrounding temperature. The surrounding temperature is 20 degree. So 20 degree convert in Kelvin, it will be 293 Kelvin. So T naught is given as 293 Kelvin. And do you know that entropy generation is nothing but entropy change of universe? But everyone knows entropy change of universe is equal to entropy change of system plus entropy change of surroundings. ठीक है सर? Exactly. मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना. This is my system and यहाँ रिजर्वायर है. The reservoir temperature is 1700 Kelvin. तो वहां से आप हीट ले रहे हैं. तो इस सिस्टम के लिए ये सराउंडिंग्स होगा सर. इस सिस्टम के लिए ये सराउंडिंग्स होगा. बिकॉज ऑफ दिस वी आर द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 300 टू 1500 केल्विन. देखो सर, बोलो सर, कुछ तो बोलो सर. कितना प्यारा सा क्वेश्चन है. Is there any problem in calculating the entropy change of system? हमारा सिस्टम क्या है सर? एयर इज अवर सिस्टम. आई नो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. देखो, I want entropy change of air. So air is at this initial state and air is at this final state. So I want the entropy change from 1 to 3, complete total entropy change. So it will be S3 minus S1 is the entropy change of system. Air is an ideal gas. Whenever it is an ideal gas, I know the pressure at 3. I know the temperature at 3. I know the pressure at 1. I know the temperature at 1. I can easily calculate the entropy change. It is CP final by initial minus RLN final by initial. Is it correct or wrong, sir? Because the process is occurring from 1 to 3. So final state is 3. Initial state is 1. This is the equation. Put karo sir, and you have to multiply this with mass because it will be per kg, because mass is not known. So you will express as per kg, but mass is known to me. Therefore, I am writing like this. So therefore, what is the mass, sir? 1 point. Somewhere we have calculated the mass. कितना आया था sir? What is the mass? What is the mass, sir? Somewhere we have calculated 1.1614. 1.1614 into Cp, it is air, 1.005 ln. Final temperature is 1500 and the initial temperature is 300 minus, for air R is 0.287 ln. The final pressure is 500
and the initial pressure is 200. I think it is correct. एक बार मैं check करता हूँ sir. Let me check once. 0.87 500 by 200. Yes. 1.07 1500. Yes. So this value is कितना आएगा sir? ये 1.61748. ये तो entropy change है. It is kilojoule per Kelvin because already I have multiplied with mass. I think this is correct. Is it correct, sir? थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ. Please calculate this value and tell me. Is it correct? $1.573 आ रहा है. Is it 1.573? नहीं, टोटल. अच्छा ये टोटल. अच्छा अच्छा ये टोटल. एग्जैक्टली. यू आर राइट सर. यू आर राइट. यू आर राइट. यू आर राइट. 1.57312 kilojoule per Kelvin. This is the entropy change of system. Exactly. Exactly. Now the question is, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सेकंड टर्म को सब्सट्रैक्ट नहीं किया होगा. बिल्कुल सही बोले आप. बिल्कुल सही बोले. I want the irreversibility. I want the irreversibility. So for irreversibility, you should find out. देखो देखो एक बार. For irreversibility, you should find out. कहां गया ये क्वेश्चन? For irreversibility, T naught into entropy generation, but entropy generation is system plus surroundings. Already system is known. Surroundings को कैसे कैलकुलेट करना है? ये surroundings है सर. इस सिस्टम के लिए ये हमारे surroundings है सर. तो how to calculate the entropy change of, ये तो रिजर्वायर है सर. ये तो रिजर्वायर है सर. What will be the entropy change of surroundings? What will be the entropy change of surroundings? बताओ सर, बताओ. Anyone? Surroundings. बोलो. Anyone? है? क्या कर रहा है प्रशांत? पी नॉट डेल्टा वी लिख रहा है. ये सराउंडिंग से, ये रिजर्वायर है रे. ये रिजर्वायर है पगा. ये रिजर्वायर है. सो व्हाट इज द इंट्रा, क्या हो. वेरी गुड, वेरी गुड. खुर्शीद आलम इज करेक्ट. हम क्या कर रहे हैं सर? माई सिस्टम इज टेकिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स. तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग से हीट निकल के जा रहा है, तो इट विल बी -Q बाई द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 700. बहुत बढ़िया. यहां पे मुश्किल होगा सर. क्या मुश्किल होगा सर? क्या मुश्किल होगा सर? मस्त क्वेश्चन है सर. हाउ टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर. सो इज दिस इक्वेशन क्लियर सर? Is this equation clear? Is this equation clear? -Q by temperature of surroundings is 1700. So ये equation. Now the question is how to calculate Q. अगर आप ये बताएंगे तो I'll give you chocolate. Anyone sir? Anyone? आ जाना raise hand पे. Why are you taking minus? Because surroundings entropy change is to be calculated. So from surroundings we are taking, तो surrounding के लिए heat minus होगा, because surroundings से system को जा रहा है. It is for system it is plus, but I want for surroundings it will be minus. How to calculate the heat transfer? बोल रहा है मैं क्या पागल हूं? रेज हैंड. क्या मुझे पता नहीं है? तू भी नमूना निकला रे. Q is क्या हो रहा सर? How do I calculate heat transfer? Sir, is it an open system or closed system? Sir Chindan, heat transfer can be written as mc delta T. अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो mcp dt, अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है mcv dt. लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है सर?
ये कौन सा प्रोसेस है सर? इसके लिए यू कैन राइट एमसीवी dt बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसके लिए क्या लिखेंगे सर? ना इधर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट ना प्रेशर इज कांस्टेंट। इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो एक बार? हाँ जी, फैजी साहब लाइन पे आ गए। देखो एक बार, फैजी साहब लाइन पे आ गए सर। एक बार देखो सर, देखो सर, डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैन आई कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज? अरे यार, वॉट एवर द सिस्टम इज रिसीविंग, वेयर फ्रॉम इट इज रिसीविंग, जो भी हीट सिस्टम ले रहा है वो तो सराउंडिंग से ही ले रहा है। तो वॉट एवर द सिस्टम हीट ट्रांसफर आई कैलकुलेट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सराउंडिंग हीट ट्रांसफर। ठीक है सर? देखो, कैन आई राइट डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, यहां पे T3 minus T1 because the process is occurring from 1 to 2. So for an ideal gas, internal energy change irrespective of the process mcv dt. So dekho sir, du is equal to, already I know the mass, 1 point, mass kitna hai sir? Mass kitna hai re baba, mass kitna hai re, kahan gaye re? 1.16144 and CV is 0.718, T3 minus T1. T3 is 1500 and T1 is 300. So this will be in kilojoule. How much is DU? 1150. DU is 1150.7 kilojoule. DU आ गया सर। बहुत बढ़िया सर। How to calculate work? I have calculated this. How to calculate work? पीछे तो देखो, इधर देखो रे। If you want the total work, work in 1 to 2 plus work in 2 to 3. 2 to 3 is a constant volume process, the work is 0. Just calculate work in 1 to 2. Just calculate work in 1 to 2. That will be the total work. बहुत बढ़िया सर। Just calculate work in 1 to 2. क्या मस्त क्वेश्चन है सर। तो वर्क इज इक्वल टू, देर इज नो वर्क इन दिस प्रोसेस, जस्ट कैलकुलेट वर्क इन दिस प्रोसेस। तो इसका एरिया कैलकुलेट करो, इसका एरिया कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दिस एरिया, हाफ इंटू ट्रेपीजियम है, सम ऑफ द पैरेलल सेट्स, दिस इज 200, दिस इज 400, दिस इज 400, दिस इज 400, 200 प्लस 400 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 1 माइनस 0.5। तो कितना आ रहा है सर वर्क, कितना आ रहा है सर? आई थिंक इट इज 0.2, 600 by 4. Is it 150 sir? Is the work 150 sir? गलत है सर? Absolutely correct sirs. So therefore now let me calculate sirs. देखो रे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे, देखो, so d dash q is equal to, कहां गए रे? तो d dash q is equal to du 1150.7 and the work is 150. So you will get the total heat transfer. What is the heat transfer, sir? अरे हमने क्या किया रे? टोटल, अरे मैं, ये वैल्यू कितना आ रहा है सर? एक सेकंड प्लीज, मैं टोटल वैल्यू लिखा। इज दिस वैल्यू करेक्ट सर? एक सेकंड, डी यू का वैल्यू सही है गलत है सर? एक बार डी यू का वैल्यू बताओ, डी यू का वैल्यू बताओ सर। 1000 आ रहा है ना? यस 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 यस, मैं तो टोटल लिखा सर, माफी चाहता हूं। 1000 इज करेक्ट आई थिंक। So d dash q is equal to du plus d dash w. So d dash q is equal to du is 1000 plus work I got as 150. तो ये आ रहा है 1150.7. Correct? Is the heat transfer correct, sir? Is the heat transfer correct, sir? बिल्कुल सर। क्या क्वेश्चन है सर ये? Yes. Correct. So now I will calculate the entropy change of, ये heat कहां जा रहा है सर?
if you are calculating, ये हम system के properties है sir, all these are system properties, so this is the heat transfer to the system is absorbing, that's why we got this value positive. लेकिन if the same thing I calculate for surroundings are losing, therefore surroundings के, अरे यार I am giving you 1,000 rupees, for me it will be minus, for you it will be plus, but the value will be same, so therefore minus 1150.7, and my reservoir is at a temperature of 1700 Kelvin. So how much is this, sir? 1150.7. What is the entropy change of surroundings? Anyone? कितना आ रहा है रे? Minus 0.67688. Excellent, sirs. Now I know. Excellent, James. James is bond. James is bond. What is the entropy change? देखो, entropy generation is given by system entropy. We have already calculated. System entropy we have already calculated 1.57312. And surroundings अभी तो आया, कितना है सर surroundings का? Surroundings is minus 0.67688. So please give me the value of entropy generation. It is 0.8962 kilojoule per Kelvin. Excellent. So I want the irreversibility. What is irreversibility? T naught ambient temperature into entropy generation. So irreversibility is 293 is ambient temperature into 0.8962. What is the value, sir? कितना रहा है सर? I think it is 200 and कितना रहा है सर? 260? क्या हो रहा ललित? 262 point. Lalit, what is happening? Is it not a good question, sir? Is it not a good question, sir? Ambient, sir. एक सेकंड इधर आइए. Please read the question. ये रिजर्वायर से ले रहे सर, हम रिजर्वायर से ले रहे सर. दी सराउंडिंग इज मतलब एम्बियंट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ये तो डेड स्टेट का टेम्परेचर है सर. टी नॉट इज ऑलवेज डेड स्टेट टेम्परेचर. बात क्लियर है ललित? मस्त क्वेश्चन है सर. ये कितने कॉन्सेप्ट्स ओपन अप हो गए सर. अभी आने वाले टफ क्वेश्चंस है सर. करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप बोलेंगे तो मैं करूंगा सर. आई एम रेडी सर्स. आई एम रेडी सर्स. सीरियसली आप बताइए. स्प्रिंग का रोल क्यों नहीं है सर जी? स्प्रिंग का रोल है, इसीलिए तो प्रेशर बढ़ रहा है. वो डायरेक्टली दे चुका है. बिकॉज ऑफ स्प्रिंग ओनली द प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 200 to 400. होप यू अंडरस्टूड सर. दैट स्प्रिंग बी नॉट देयर. अगर स्प्रिंग नहीं रहता है तो प्रेशर उतना ही रहेगा. कहां तक? 200 से लेकर टिल इट टच स्टॉप्स इट विल बी 200 ओनली. बाद में एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग तब बढ़ेगा. वेरी गुड सर. मजा. एक खतरनाक क्वेश्चन दू सर, ले लो आपके लिए. अरे यार गॉड, अरे आते ही जा रहा है. हाँ जी सर. नहीं, ये खतरनाक है सर. इसको छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे सर. These are all like concept building questions. These are all concept building questions. पढ़ो सर. जबरदस्त क्वेश्चंस है सर. पढ़ो एक बार. I request you to read the question.
Come on, come on. चलो चलो चलो. मजा 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 रे. चलो. What a question this is. देखो टफ क्वेश्चंस देंगे तो आप उड़ जाएंगे. व्हेन आई गिव यू टफ क्वेश्चंस आप जाएंगे. कोई क्लास में एक भी बच्चा नहीं है. देखो सब भाग गए. सब भाग गए रे. पढ़ो सर. आई विल डू दिस क्वेश्चन. बस 14 है. उनको क्या है. आते जाते आते जाते हैं. यहाँ पे मजा नहीं आता सर. ओनली प्लस पे ही मजा आता है सर. इसलिए आई डोंट कम ऑन यूट्यूब. यहाँ पे टाइम पास के लिए मजा है सर. करेक्ट. टाइम पास के लिए मजा है यहाँ पे. पढ़ो सर. A 10-meter high cylinder with a cross section, the cylinder height is with cross sectional area of 0.1, area is given, has a massless piston at the bottom. ये पे एक piston है सर. It is massless piston. Okay. Okay. With water at 20 degrees on the top. Oh my God. यहाँ पे पानी है रे बाबा. मस्त क्वेश्चन है सर. वी विल एंजॉय दिस क्वेश्चन. मैं बता रहा हूं ना. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्वेश्चन. ओके. एयर एट 300 केल्विन and the volume is 0.3 meter cube under the piston is heated so that the piston moves up spilling over water. क्या मस्त है सर. इधर देखो रे बाबा. सुनो केयरफुली. एक सिलेंडर है. एक पिस्टन है. Below the piston there is air. Above the piston there is water. Now air is heated. When air is heated, this air will expand so that the piston rises. When the piston is rising, whatever the water is there, it is spilling over. Spilling over. How long? Until, देखो, moves out, spilling the water over the side. The total heat transfer when all the water has been pushed out. जब ये उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है, वो पूछ रहा है हाउ मच हीट इज टू बी सप्लाइड सो दैट ये पूरा पानी नीचे गिर जाके पिस्टन टॉप पे आ जाए. क्या ही तो क्वेश्चन है सर. क्वेश्चन समझ में आया नहीं सर. बोलो सर जी. कमेंटिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर. कोई दिक्कत हो रहा है सर. इज एवरीथिंग फाइन. इज देयर एनी प्रॉब्लम सर. क्या दिक्कत हो रहा है सर. व्हाट इज द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम. नाउ फाइन. नो प्रॉब्लम ना. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है देखो. देर इज a piston cylinder arrangement. The total height is 10 meter. So here we have air and above we have water. See this question properly. ये कलर मजा नहीं आएगा. मजा मजा चाहिए आप. मजा मजा चाहिए. ये देखो. ये है पानी. Okay. My dear students,
Initially the volume is given, it is 0.3 मीटर क्यूब. क्लियरली क्वेश्चन में दिया है, देखो एक बार क्लियरली देखो 0.3 मीटर क्यूब है. एंड व्हाट इज द एयर टेम्परेचर? 300 केल्विन. Now this piston area is given, area of piston. What is the area of piston, sir? Area of piston is 0.1 meter square. Can you tell me, my dear students, what is the height of air? बहुत सिंपल है सर. Volume is equal to area into length. So what is the volume of air? 0.3. What is the area? 0.1 into length. So length will, volume of air is 0.3, the area of the piston is 0.1, and the length of air column is 3 meter. So this length is 3 meter. You tell me what is the height of water. So if the total height is 10 meter, this is 3, so height of water is 7 meter. Excellent, sir. And above there is atmospheric air at 100 kilopascal. How do you know, sir? Clearly he has given in the problem the atmospheric pressure. There is atmospheric pressure of 100 kilopascal. ठीक है sir. Once I solve this question, आप enjoy करेंगे sir. Conceptually sir. कसम से बोलो सर, क्या मैं आपका टाइम वेस्ट किया? Seriously, you tell me, did I waste your time, sir? Seriously, आप बताइए सर. बोलो सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर नहीं दे रहे. ठीक है, वेरी गुड. खुर्शीद, अच्छा लगा सर. इधर देखो सर, इधर देखो सर. Can I calculate the initial pressure of air? मेरे प्यारे दोस्तों, whenever I use ideal gas equation PV is equal to MRT, P कौन सा प्रेशर है सर? I repeat sir, whenever I take ideal gas equation PV is equal to MRT, P क्या है सर? Absolute pressure है सर. Absolute. That's why I have taught so many times sir. Confuse मत होना. So many times I taught absolute pressure. तो please take absolute pressures. ठीक है. Can I calculate the pressure? यहाँ का pressure कितना है सर? Because this pressure is balanced. Because this is massless. ये clearly massless दिया है सर. ये massless दिया है सर. What is the pressure here? That pressure is balanced by air. Can I write this as P naught plus rho GH? लिख सकता हूं सर? क्या मैं लिख सकता हूं सर? If you want the pressure here, यहाँ पे there is atmospheric pressure plus there is rho GH column. There is atmospheric pressure plus rho GH. That is balancing the initial pressure of air. So is this equation correct or not, sirs? Bolo, sirs. Why are you adding this P naught? Because every pressure is absolute pressure. यहाँ पे हम सारे absolute pressures ले रहे हैं सर, ठीक है? But already this is in kilopascal. अगर ये kilopascal में है, this should also be in kilopascal. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं. Rho is kg per meter cube, g is meter per second square, and h is in meter. What is kg meter per second square? Newton. kg meter per second square is Newton. एक मीटर स्क्वायर गया तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज पास्कल. सो दिस विल बी इन पास्कल. हाउ कैन आई ऐड पास्कल टू किलो पास्कल? सो आई डिवाइड दिस विथ 1000 सो दैट दिस इज ऑल्सो इन किलो पास्कल. अब सही है. तो लेट मी कैलकुलेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर. तो व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर? ध्यान से सुनिए सर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 प्लस रो ऑफ वाटर इज 1000, g is 9.81 and the height column, so water is of water height 7, तो यहां का प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है rho gh, so therefore by 1000. तो कितना आ रहा है सर? Why are you dividing with 1000? Because I want in kilopascal.
प्लीज गिव मी द वैल्यू ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर. कितना आ रहा है सर? हाउ मच इज दैट प्रेशर? नो वन इज गिविंग आंसर सर, नो वन इज गिविंग. वन वन. हे भगवान. टोटल बाबा, टोटल दिस प्लस दिस 168 पॉइंट. ठीक है सर, ठीक है सर. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन. खुली देखो सर, हाउ इज प्रेशर वेरिंग? ये तो P1 किसका प्रेशर है सर? P1 किसका प्रेशर है सर? एयर का प्रेशर है. इनिशियल हाइट इज 7 मीटर. इनिशियल हाइट इज 7 मीटर, देयरफॉर इतना है. थोड़ी देर के बाद व्हेन द पिस्टन इज मूविंग अप, पानी गिर जाएगा, तो पानी का हाइट कम हो जाएगा सर. व्हेन द पानी का हाइट इज बिकमिंग लेस, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर ऑफ एयर? It decreases. I repeat, sirs, when you are heating this, the piston is moving up, so the water is spilling over. Water is spilling over. When the water spills over, the height of water is decreasing. When the height of water is decreasing, the pressure of air is also decreasing. How is the pressure of air decreasing? Linearly. Height देखो linearly. क्योंकि volume is area into height. Volume is area into height. क्या piston का area change हो रहा है सर? नहीं. So therefore volume is directly proportional to height. So दोबारा बताओ सर, volume is area into height. So volume and height are linear. When pressure and height are linear, pressure and volume are also linear. Excellent, sirs. Can anyone in the class tell what is the final pressure of air? देखो sirs, finally when you are heating, all the water is gone. यहां पे आ गया sirs piston. This is massless. Now this pressure is P naught and this is massless. So when this is massless, if I draw the free body diagram of piston, इसका कोई mass नहीं, this नीचे should be equal to this final. So the final pressure of air is atmospheric pressure. Excellent sir. Someone gave the answer as 206. एक बार मैं check कर लेता हूँ sir. I do not know sir. एक बार मैं check कर लेता हूँ sir. Okay. क्या ये बात समझ में आ गई सर सभी को? Please tell me, is it clear sir? बहुत बढ़िया sir. देखो, let me plot now. What is the final volume of water? Anyone in the class? What is the total height, sir? When the piston is moving up, पूरा पानी गिर जाएगा और ये height होगा 10 मीटर. And this area of the piston is given as 0.1. So what is the volume? Volume is area into height. The final height of water is 10, so therefore it is 1 meter cube. Excellent, sirs. The final volume is 1 meter cube. Excellent, sirs. Very good. So therefore, now I'll write here. मेरे प्यारे दोस्तों, initial volume is 0.3 meter cube and the final volume is 1 meter cube. Initial pressure is 168 point कुछ था सर. Very good. All are in kilopascal. And the final pressure is atmospheric pressure. Can you tell me why the final pressure is atmospheric? क्या आपको ये समझ में आया सर? बोलो सर. Why the final pressure is atmospheric pressure, sir? क्योंकि once the water is moved out, piston is massless, this atmospheric pressure and this pressure is balanced. So how is the pressure volume changing? अभी तो बताया sir, volume is equal to area into height. इधर देखो. So therefore this height can be, volume is area into height. Height can be written as volume by area. तो यहाँ पे volume by area लिख सकते हैं. तो volume power is 1, pressure power is 1. Linearly it is changing. Linearly it is changing. So therefore linearly it is changing. वाह 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 वाह, क्या मजा आ गया सर. वाह वाह वाह, मस्त मजा आ गया सर. क्या पूछा है सर? हीट ट्रांसफर पूछा है सर. क्या पूछा है सर? हीट ट्रांसफर. Of course, my air is a closed system. क्या air is the mass of air changing, sir? Mass of air is not changing. Simply air is expanding. Water is moving out.
So this is the process. D dash q is equal to du plus d dash w. Excellent, sir. What do you want? I want the heat transfer. So calculate the internal energy change. So it is air. So for air, internal energy change is mcv, T final minus T initial. Oh my God, I do not know the final temperature. The initial temperature is 300. I don't know the final temperature. Can I calculate the final temperature? My dear students, can I calculate the final temperature? If so, how, you tell me? Why are you calculating final temperature? Because I want the change in internal energy. I want the change in internal energy. Bataiye sir. So, did I calculate the mass, sir? Mass of air. Did I calculate mass of air, sir? Because we are applying for air. So, someone said 217. एक बार check करते हैं, sir. PV is equal to MR. Is the mass given, sir? मैं calculate किया क्या mass को? Yes, मैं calculate किया, sir. What is the initial pressure? What is the initial pressure? 168 point, कितना था, sir? 168.67. And the initial volume is 0.3 mass. For air, R is 0.287. And the initial temperature, if it is, अगर ये initial pressure है, तो initial volume, initial temperature होगा. So what is the initial temperature? 300. So can you give me the value of mass, my dear students? क्या आप mass का value दे सकते हैं, sir? No one is giving, sir. No one is giving, sir. सर कैलकुलेटर भी कैरी नहीं कर सकते सर आप? बोलिए सर. Is it correct? Wonderful, sir. Wonderful. I have a question. How to calculate the final temperature? You know, my dear students, is the mass of air changing? The same air is expanding. Whether it is mass of air under initial conditions, mass of air under final conditions, it's not changing. So PV is equal to MRT. So PV by RT is mass. So mass is constant. So PV by RT is constant. So therefore P1 V1 by RT1 is equal to P2 V2 by RT2. ये कट जाएगा. तो initial pressure is 168.67, initial volume is 0.3, and the initial temperature is 300, should be equal to final pressure is 100, final volume is 1, and the final temperature is unknown. Please give me the value of final temperature. 592. वाह 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 वाह. खुर्शीद अकेला बैच को लीड कर रहा है सर. इसलिए खुर्शीद को सलाम बोल रहा हूं सर. मैं खुर्शीद को सलाम. बहुत बढ़िया. उसके बाद क्या करना है सर? द इनिशियल टेम्परेचर इज 300, फाइनल टेम्परेचर इज 592, mass is 0.57. So can I calculate the internal energy change? M is 0.5877. CV for air is 0.718. MCV T2 minus T1 592.87 and T1 is 300. So therefore du is equal to कितना आ रहा है sir? What is the value of du? Anyone with du? Excellent, says 123.58 किलोजूल. एक्सलेंट सर जी. क्या आपको du पूछा है सर? ना. व्हाट इज यस? du वैल्यू, दिस du वाली वैल्यू इज 123.58 किलोजूल. बहुत बढ़िया. लेकिन ही इज आस्किंग हीट ट्रांसफर. क्या कोई क्लास सर P2 100 किलो पास्कल कैसे आया बता दीजिए. इधर देखो रे, ललित बाबू ने एक सवाल पूछा, सर P2 100 कैसा है एक बार बता दीजिए. इधर देखो ललित बाबू, पूरा पानी पानी था यहां पे. इनिशियल प्रेशर वाज 168.67. अब देखो, अब ये हीट कर रहे हैं तो पिस्टन ऊपर उठ रहा है, ये पानी पूरा गिर जा रहा है सर. अब पिस्टन पूरा ऊपर है. पिस्टन इज गिवन एज मासलेस. अंदर एयर है सर, ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर है सर. फ्री बॉडी डायग्राम पिस्टन का बनाओ. P0
और P2, ये तो मासलेस है, क्या होगा सर इक्विलिब्रियम में? क्या होगा सर प्यारे ललित, क्या होगा? बोलो सर। ओके, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, बोलो सब लोग एक बार, ओके सर, ओके सर। नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा रे। वेरी गुड सर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखो, आई वॉन्ट हीट ट्रांसफर, डी यू इज ऑलरेडी नोन, डी डब्ल्यू, हाउ टू फाइंड आउट वर्क? वेरी गुड सर, वर्क आ गया रे, एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्रिपीजियम, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इट इज 168.67 प्लस ये वाला हाइट, ये कितना है रे, 100 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 1 माइनस 0.3। तो कितना आ रहा है सर ये वर्क? कितना आ रहा है सर ये वर्क? वर्क कितना आ रहा है रे? वर्क 94। 5G इज करेक्ट। वाह वाह, क्या बच्चे हैं रे, ऐसे बच्चों को पढ़ाना मजा ही कुछ अलग है सर। du is 123.58 and the work is 94.03. So what is the value of heat transfer? Anyone in the class? Heat transfer कितना आ रहा है रे? हीट ट्रांसफर कितना आ रहा है रे? पेज नंबर 6 है, 7 पेज नंबर कहाँ है रे? ये भगवान, 7 पेज नंबर कहाँ है रे? पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो हाउ मच इज दैट? कितना आ रहा है सर व्हेन यू आर एडिंग 217? मेरा आंसर कहाँ गया रे? पता ही नहीं चल रहा है रे। 217 इज द राइट आंसर। वाह, अच्छा सवाल था या नहीं? वॉज इट अ गुड क्वेश्चन? कुछ तो बोलो रे। हिमेश उड़ गया देखो। वाह, क्या क्वेश्चंस बन रहे सर, मजा मजा रे, मजा मजा रे। ठीक है, ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए रे। कम ऑन कम ऑन, दिख रहा है सर? कैन यू सी द क्वेश्चन? कैन यू सी द क्वेश्चन? हे भगवान, ऋषिकेश चौधरी, श्रीनिवास पिल्ली, फैजी, प्रशांत कुमार, देखो, 3 रियल हीट इंजन्स। बी केयरफुल सर, they are not reversible heat engines, they are real heat engines. uh, Reversible is like, एक idealization है. These are real engines. If they are real engines, can I apply efficiency as 1 minus T over by T higher? Nah, it is applicable only when it is reversible. So the general equation of efficiency is 1 minus heat rejection by heat supply. At least you know that. अच्छा, you are सचिवालय employee, तेलुगु వచ్చా నానా? ओ बाबू, तेलुगु వచ్చా? बहुत बढ़िया। देखो सर, 3 रियल हीट इंजन्स हैव सेम, ये वर्ड कैच करना, सेम थर्मल एफिशिएंसीज एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, एंड आर कनेक्टेड, मस्त क्वेश्चन है सर, ये भी मस्त क्वेश्चन है सर। हाँ, द फर्स्ट इंजन एब्जॉर्ब्स, देयर इज अ फर्स्ट इंजन, इट इज एब्जॉर्बिंग 4800 किलोजूल from a reservoir at 1500 Kelvin. And the third engine, this is first, this is second, and the third engine is rejecting 600 Kelvin to a sink at 200. 200 diya sir, is it 200? Yeah. Which of the following, MSQ aa gaya re baba? Read the question properly. Okay, okay, okay.
Come, 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 come. Read this properly. Let me explain what the question is. Let me read. Three heat engines have same thermal efficiency and are connected in series. The first engine absorbs 4800 at 1500 Kelvin, and the third engine rejects 600, 48, 600. Okay. Which of the following statements are correct? Okay. Suno sirs. This temperature is 1500 Kelvin. It is taking Q1, which is 4800. This is engine A. Let it develop work A. Let it reject Q2, and this is given. And the same is rejected to second. Dekho, it is B. It is developing work B, and it is rejecting Q3. And the same is given to the third engine. And this Q4 is given as 600, and this is 200. Yes, sir. Three engines are connected in series. Dekho. And this temperature is given as 200 Kelvin. Now, what did he say? This is the first engine. This is the second engine. This is the third engine. All have equal efficiencies. That is given. I am not taking, sir. So, what is the efficiency of A? Efficiency of B? Efficiency of C? Let us take it as neta. I am not taking, but it is given in the question. Can you tell me what is the efficiency of A? 1 minus the efficiency. For engine A, this is rejection, this is supply. So 1 minus heat rejection by heat supply. What is the efficiency of B? For B engine, it is supply, this is rejection. 1 minus heat rejection by heat supply. What is the efficiency of C? For C engine, it is supply, it is rejection. 1 minus heat rejection, that is Q4, by heat supply is Q3. Excellent, sirs. Excellent. Very good. But you know, neta A, neta B, neta C, all are same. So neta A is neta only, neta B is neta only, neta C is neta only. ठीक है, sirs. Okay. Can I write Q2 by Q1 as 1 minus neta? Q2 by Q1, you take, yes, sir. What is Q3 by Q2, sir? Q3 by Q2, 1 minus neta. What is Q4 by Q3? It is also 1 minus neta. Excellent, sirs. Now the problem is, I have to calculate the efficiency. How do I calculate? आप बताइए सर. कुछ तो लॉजिक है. In the problem, Q4 is given as 600. Q1 is given as 4800. भी करो आप Q2, Q3 को eliminate करो सर. Whatever you want, you do eliminate, because those are not given. Only Q1 and Q4 are given. How can I eliminate? सोचो एक बार. How can I eliminate? मैं सोच रहा हूं तीनों को मल्टीप्लाई करो. देखो एक बार. Q2 by Q1, Q3 by Q2, Q4 by Q3. So what will be the value, sir? Q2 by Q1 is 1 minus efficiency. Q3 by Q2 is 1 minus efficiency. Q4 by Q3 is 1 minus efficiency. 1 minus efficiency, 1 minus efficiency, 1 minus efficiency, whole cube. Oh my God. Maja, 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 maja. Aga re baba. What is Q4? It is 600. What is Q1? 4800.
दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एफिशिएंसी का होल क्यूब. वेरी गुड सर. नाउ व्हाट आई डू इज इसको हटा देंगे. क्या करेंगे रे बाबा? लेट मी इरेज दिस. लेट मी इरेज दिस. हाँ जी सर. लेट मी इरेज दिस. हाँ, अब देखो. देखो, what is Q4? It is 600. What is Q1? It is 4800. That should be equal to 1 minus efficiency का whole cube. So ये दो गया. 6 1 6 8. 1 by 8 is equal to 1 minus efficiency का whole cube. So can I write 1 by 8 as 1 by 2 cube? Yes sir. So can I write this as 1 by 2 cube? 100%. Why not? So 1 by 2 का whole cube is 1 by 8. That is 1 minus efficiency का whole cube. Take cube root. So 1 minus efficiency is equal to 1 by 2. Our efficiency is equal to half. That is 50%. आ गया sir. Each engine has an efficiency of 50%. आ गया answer. वाह. तो the thermal efficiency of each engine is 25. गलत. The thermal efficiency of each engine is 50. It is correct. Next क्या बोला है सर? Next क्या बोला है सर? The work done by A is 24. The work done by C is 600. चेक करते हैं सर. चेक करते हैं सर. अगर इसका एफिशिएंसी 50% है, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसका एफिशिएंसी 50% है, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, तो इफ द एफिशिएंसी इज 50%, if the input is 4800, what will be the output? 50% means 2400. So if the output is 24, input is 48, what will be the rejection? Loss is 24. अरे नहीं आ रहा है सर आपको. If the efficiency is 50%, output by input, work will be 2400. Then only the efficiency is 50%. If the work is 2400, supply is 4800, rejection will be 24. दोनों का ऐड करो, इतना आएगा. Similarly, इसका एफिशिएंसी कितना होगा सर? What is the efficiency of this? Anyone in the class? इसको हटा देंगे सर. Let me remove. हाँ. Anyone, what is this? Q2 is 2400 Q2. So what will be the efficiency of this? अगर input 2400 है, तो output कितना होना चाहिए सर? Because 50% is the efficiency, 1200. So if 1200 is the work, input is 2400, what is the loss? 24 minus this 1200. So ये this is taking 1200. मुझे बताइए सर, अगर 1200 सप्लाई है, रिजेक्शन 600 है, तो वर्क कितना होगा सर? 600 होगा. तो व्हाट इज द वर्क ऑफ ए? 2400. What is the work of C? 600. So work of A is 2400. Yes. Work of C is 600. So B, C, D are correct. वाह. नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा रे. If this is clear, I'll proceed, sir. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? कैन आई प्रोसीड विथ योर परमिशन? चलो ये वाला लीजिए. Read this. I'm back in 1 minute. Please read this.
चलिए, यस यस, अच्छा सवाल है सर। 2 kg of an ideal gas is taken along the cycle A, B, C, D back A. ठीक है सर। What is the efficiency? Wait, sirs. This pressure is given as P naught. This pressure is given as 2 P naught. This volume is V naught. This is 2 V naught. Anyone got the answer? किसी को आंसर आया क्या रे? Come on, come on. चलिए, लेट्स डू दिस। अब देखो सर, विल डू दिस क्वेश्चन सर। अच्छा क्वेश्चन है। ये है पीवी पी नॉट। ओके, ये है पी नॉट टू पी नॉट, वी नॉट टू वी नॉट। ओके, और ये हुआ ए बी सी डी। चलो, एनीवन गॉट द आंसर सर? कोई टेम्परेचर ही नहीं दिया यहाँ पे। टेम्परेचर की जरूरी ही नहीं है सर। व्हाई आर यू आफ्टर टेम्परेचर? हाँ देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कितना प्यारा क्वेश्चन है सर। दिस इज अ साइकिल विच इज rectangle on PV diagram. Efficiency is nothing but net work by heat supply. How to calculate net work? Network is always on PV diagram closed area. So net work is equal to area of closed region. Means already I taught this. अब मैं पूरा क्यों क्या everything I explained. So what is the closed area? Length of the height of the rectangle, width of the rectangle. What is this height? 2 P naught minus P naught is P naught. And 2 V naught minus V naught, this is V naught. This is the equation of network. Is there any problem, sir? Please look at 2 P naught minus P naught is P naught. 2 V naught minus V naught is V naught. So P naught V naught is the network. ठीक है, sir. Now, how to find out the heat supply? बताइए सर, हाउ डू आई फाइंड द हीट सप्लाई सर? गलत गलत गलत, फैजी गलत गलत, फैजी गलत। कैन एनीवन इन द क्लास टेल हाउ टू फाइंड आउट हीट सप्लाई? बोलो सर, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। हाउ टू ए बी सी नेट हीट? ओके, देखो एक बार, फ्रॉम ए टू बी द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। इट इज अ, मैं क्लास में बताया था, कितने अच्छा बताया था सर। Whenever the constant volume is moving upwards, it is a heat supply. Whenever constant pressure is moving to the right, when volume is increasing at a constant pressure, heat supply. So I can say there is a heat supply in this process which is at constant volume, and there is a heat supply in this process which is at constant pressure. Hope you understood this. So yes or no, sirs? All these I had explained very clearly, sirs.
ओके नाउ देखो ऑलरेडी मुझे नेटवर्क आ गया सर, देखो ऑलरेडी मुझे नेटवर्क आ गया पी नॉट वी नॉट, ठीक है सर, वेट वेट, तो इसको मैं मिटा दूंगा सर, आई विल रिमूव दिस। देखो सो टोटल हीट सप्लाई इज इक्वल टू हीट सप्लाई इन ए बी which is at constant volume plus heat supply in PC which is at constant pressure। आपको मैं क्लास में कितना प्यार से बताया सर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर इज चेंज इन एंथैल्पी, सो देयरफॉर mcv dt, AB is at a constant volume, AB is at a constant volume, so it is initial state, it is final state, so TB minus TA DH. In this there is a constant pressure heat supply, so this is the initial state, this is the final state, so it is TC minus TB. Enthalpy change in enthalpy is mcp dt TC minus TB। क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आया सर? Have you understood this equation sir? बोलिए सर। हाँ जी सर, देखो एक बार, बट यहां पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गया सर। कैसे कंफ्यूज हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर इज du mcp dt, कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर इज dh which is mcp dt। मैं कंफ्यूज क्यों हुआ पता है? प्रॉब्लम में प्रेशर वॉल्यूम्स दिया है लेकिन मेरा टेम्परेचर में है सर, मैं कैसे यहां पे कंफ्यूज हो गए, क्या करूं? बहुत सिंपल है सर, कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ पीवी। कैसे? पीवी इज एमआरटी, लेकिन यहां पे एम है टी है आर नहीं है, तो आई विल राइट सीवी एज आर बाई गामा माइनस वन, cp can be written as gamma r by gamma minus 1 tc minus tb। excellent sir, problem is solved now। the total heat supply is 1 by gamma minus 1। देखो mrtb, pv is mrt, mrtb it is pbvb, because pv is mrt minus mrta pava plus gamma by gamma minus 1 mrtc is pv mrtb pbvb। excellent sir, ठीक है। now the total heat supply is given by 1 by gamma minus 1, what is pbvb? देखो एक बार, this is b, what is the pressure at b? what is the pressure at b? 2p naught। what is the volume at b? the volume at b is v naught minus PAVA। What is the pressure at A? P naught। What is the volume at A? Volume at A का volume V naught plus gamma by gamma minus 1 into PCVC। What is the pressure at C, sir? Pressure at C is 2P naught। Volume at C। What is the volume at C, sir? 2V naught। PBVB। What is the pressure at B? 2P naught। VB, what is the volume at B? What is the volume at B? V naught। Okay, no problem at all। therefore the total heat supply is क्या होगा? टोटल हीट सप्लाई, इसको मैं QS लिखूंगा, टोटल हीट सप्लाई इज 1 by gamma minus 1 into 2 P naught V naught minus P naught V naught is P naught V naught plus gamma by gamma minus 1। देखो 4, 2 into 2 is 4, 4 P naught V naught minus P naught V naught is 2 P naught V naught। excellent sir। तो total heat supply is given by 1 by gamma minus 1 P naught V naught बाहर ले लेना, 1 by gamma minus 1 P naught 1 plus 1 by gamma minus 1 P naught V naught, ये 2 गामा आएगा सर, दोबारा बता रहा हूं, P naught V naught 1 by gamma minus 1 बाहर, तो 1 P naught V naught 1 by gamma minus 1 2 gamma। excellent sir। so I got the total heat supply। now I want efficiency। how do I calculate efficiency, sir? how do I calculate efficiency?
It is the net work by heat supply. So efficiency is already net work is P naught V naught by heat supply is P naught V naught 1 plus 2 gamma by gamma minus 1. So ये कट जाएगा सर. तो efficiency is equal to gamma minus 1 by 1 plus 2 gamma. Is the value of gamma given, sir? Sir, and sir, Prashant has given the answer and Khurshid Alam has given the answer. बहुत अच्छा लगा sir. तो gamma minus 1 by is the value of gamma given? Air. खत्म है sir. Air. So efficiency is for air gamma is 1.4. What is the value, sir? 0.1052 or 10.52 percentage. और एक बात याद रखना सर, सिंपली ही सेज एफिशिएंसी डेसिमल्स में छोड़ देना 0.10. अगर वो एफिशिएंसी को परसेंटेज में पूछता है तो 10.52 लिख देना सर. मोस्टली ये नेट के क्वेश्चंस आएंगे. क्या ये बात सबको समझ में आ गई सर? क्लियर सर जी? क्लियर सर जी? ललित है जिंदगी में सर, आपको एक्सी में बहुत फायदा होने वाला है सर. एमई एक्सी में देखते जाना. ये करो. आहा हा 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 हा, क्या मस्त क्वेश्चन है रे. पढ़ो सर. पढ़ो रे बाबा, बाबा पढ़ो रे. एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या सर? कुछ क्वेश्चन मिस हुआ लग रहा है मुझे. मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ मिस हुआ सर. मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन मिस हुआ. सारे किए सर. कंटिन्यूअस इज एनी क्वेश्चन मिस सर? एक बार देखते हैं सर. मुझे लग रहा है कहीं मिस हो गया. 16th किए, 17th किए, 18th किए, 19th किए, 20th. हाँ 20th सही है सर. सही है. सही है सर. नो वी डिडंट मिस. कैन यू सी सर, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर, हो सके तो आप लैपटॉप पे वॉच करना सर. नहीं आएंगे बैकवर्ड से, फॉरवर्ड पे और अच्छे क्वेश्चंस हैं. नहीं आएंगे. नहीं आएंगे सर. 21st क्यों आ रहा रे? 20th कहां गया? हाँ 20th करेंगे, 21st क्यों करेंगे? पढ़ो सर. What a question, sir. So it's a humble request, sir. If possible, watch it on desktop या लैपटॉप पे देखना सर. डोंट वॉच इन मोबाइल. मोबाइल में शायद उतना अच्छा नहीं दिखेगा. ठीक है सर, पढ़ो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, शायद आ सकता. A constant volume tank contains 20 kg nitrogen at 1000 Kelvin. Okay, there is a tank which is of constant volume. That tank contains a rigid tank of constant volume contains 20 kg nitrogen at 1000 Kelvin. And a constant pressure device, there is a constant pressure device because piston is moving freely. A constant pressure device है, in that contains 20 kg nitrogen at 300. ध्यान से सुनना. This is at high temperature of 1000. This is at lower temperature of 300. A heat engine placed between the tank and the device extracts heat from high temperature and produces work and rejects heat to the lower temperature. The maximum work that can be produced by the heat engine is. So the value of gas constant of nitrogen is given as 0.2968 and CP value is given, CV value is given, gamma for nitrogen is given. What a beautiful question. Now, so how many questions do we have? क्यों सर थक गए आप? चंदन थक गए सर? अगर थक गए तो बोलो. मैं तो थका नहीं सर, 2 क्लासेस लिया सुबह और ले रहा हूं.
ठीक है, चलो, व्हाट अ क्वेश्चन दिस इज। ठीक है सर जी, देखो कैसे सॉल्व करेंगे सर। वेन एवर ही सेज मैक्सिमम वर्क, क्या होना चाहिए सर। वेन एवर ही सेज मैक्सिमम वर्क, क्या होना चाहिए सर। बोलो 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 सर। रिवर्सिबल, एक्सलेंट। मेरे पास कुछ कंडीशंस है सर। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। When is greater than valid? When is equality valid? Greater than is for irreversible, equality is for reversible. तो इस केस में should I go for reversible or irreversible? I have to go for reversible, sir, because you want maximum work. So therefore, the entropy change of universe is equal to zero because I want maximum work. For maximum work, it has to be reversible. Excellent, sirs. Now, what is the meaning of entropy change of universe? It is the entropy change of system plus entropy change of surroundings. Very good, sir. What is your system? मेरा system है, sir जी. My system is my engine. My engine is my system. Whatever the working fluid is there in the engine, it is my system. Very good, sir. इस सिस्टम के लिए ये एक सराउंडिंग होगा। दिस सिस्टम इज इंटरैक्टिंग विद दिस सराउंडिंग्स, दिस सिस्टम इज इंटरैक्टिंग विद दिस सराउंडिंग्स, ये एक सराउंडिंग होगा। मेरा सिस्टम इधर से भी इंटरैक्ट कर रहा है, इधर से भी इंटरैक्ट कर रहा है। सो फॉर माई सिस्टम दिस इज ऑल्सो सराउंडिंग्स, दिस ऑल्सो सराउंडिंग्स, सो देयरफॉर देयर आर टू सराउंडिंग्स। यस सर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व हियर। Can you tell me what is the entropy change of system? Because I want universe entropy change. So universe entropy change is system plus surroundings. System plus surroundings. It should be equal to universe is equal to zero because it is reversible. तो reversible के लिए equal होता है तो zero है. What is the entropy change of system, sir? Anyone? Sir. Heat engine operates on a cycle. So system is undergoing cycle. Entropy is a property. Property is a point function. So if it undergoes a cycle, my cycle means initial point और final point same है. तो एक cycle के लिए entropy change क्या होगा? My system is undergoing cycle, sir. My system is undergoing cycle, sir. ऐसे questions मैं क्लास में करवाया था सर. My system is in the heat engine. It is undergoing the cycle. तो system is undergoing cycle. तो एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन के लिए व्हाट इज द चेंज इन प्रॉपर्टी। सो साइकिल के लिए वहां से फिर वहीं आएगा। तो पॉइंट जब सेम है तो एंट्रोपी सेम होगा, जब एंट्रोपी सेम होगा चेंज इन एंट्रोपी जीरो। किसके लिए जीरो होगा? सिस्टम के लिए जीरो होगा, बिकॉज इट्स नॉट सराउंडिंग्स व्हिच आर अंडरगोइंग साइकिल, सिस्टम इज अंडरगोइंग साइकिल, तो इसके लिए ये जीरो होगा। तो देयरफॉर नाउ व्हेन दिस इज जीरो, सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। Entropy change of universe is greater than or equal to zero. But I want maximum work. So maximum के लिए equal होना चाहिए. Universe is system plus surroundings, which is equal to zero. But system is undergoing cycle because heat engine operates on a cycle. My system is undergoing cycle. Cycle, entropy is a property. Property is a point function. So when the system undergoes a cycle, initial final points are same. When points are same, change in state is zero. So therefore system entropy change is zero. Means surrounding entropy should be zero. कितने surrounding है sir? 1 and 2, 1 and 2. So therefore that entropy change of surrounding should be zero. देखो सर, ना इसको पूरा इरेज करूंगा सर, इसको पूरा इरेज करूंगा तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स शुड बी जीरो। देयर आर टू सराउंडिंग्स, वन इज दिस, देखो देखो। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स का मतलब इसको हम वन बोलेंगे, इसको हम टू बोलेंगे। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ वन सराउंडिंग प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ टू सराउंडिंग्स शुड बी जीरो। Excellent, sirs. Excellent. And nitrogen can be treated as an ideal gas. Yes or no, sirs? Nitrogen can be treated as an ideal gas. Nitrogen can be treated as ideal gas. So therefore, देखो देखो
कैन आई राइट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट? देखो आइडियल गैस है एम सी वी, एम को कॉमन ले लो, सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन। क्या हम इसको लिख सकते सर? आई एम ट्राइंग टू, तो यू मे बी वंडरिंग सर ये इक्वेशन क्यों लिख रहा है, मैं कुछ यूज करना चाह रहा हूं सर। क्या यूज करना चाह रहा है सर? क्या यूज करना चाह रहा है सर? क्योंकि ये रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट v1 v2 इज सेम, व्हेन v1 v2 इज सेम v2 by v1, देखो सर दोबारा बता रहा हूं सर, डोंट वरी। When volume is, it is a rigid container, when volume is constant v1 v2 is same, when v1 v2 is same, इसके लिए लिख रहा हूं सर v2 by v1 is 1, log 1 is 0, ये कट जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ 1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 cv ln T2 by T1। यहां पे T2 का मतलब फाइनल टेम्परेचर एंड T1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर। T2 इज फाइनल, T1 इज इनिशियल। सिमिलरली इधर आइए, आई वॉन्ट द एंट्रोपी चेंज फॉर टू। क्या आप बता सकते हैं मैं क्या फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं? m इंटू सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? इट इज अ कांस्टेंट। अरे यार, फॉर आइडियल गैस वी हैव थ्री इक्वेशंस, आई कैन यूज एनी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। तो इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर बोला है, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम ए जीरो। सो व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, पी फाइनल पी इनिशियल इज सेम, तो पी फाइनल बाय पी इनिशियल इज 1, log 1 is 0, ये हट जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ 2 विल बी इक्वल टू मास ऑफ 2 cp ln t final by ti initial। एक्सलेंट। ये किसका है सर? इनिशियली इट इज एट 300। या ध्यान से सुनो सर, माय सेकंड बॉडी इज इनिशियली एट 300, माय सेकंड बॉडी, ये सेकंड के लिए लिखे, सेकंड इज इनिशियली एट 300, माय फर्स्ट बॉडी इज इनिशियली एट 1000, ये 1000 होगा सर। व्हाट इज टीएफ? हाउ लॉन्ग दिस इंजन रन्स। यहां से हीट ले रहे तो इसका टेम्परेचर घटेगा, यहां हीट दे रहे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हाउ लॉन्ग इट रन्स? अंटिल बोथ रीच सेम टेम्परेचर। जब दोनों का फाइनल टेम्परेचर टीएफ बन जाएगा, the engine stops because there is no temperature difference. When there is no temperature difference, how can it absorb heat and develop work? तो जब यहां से हीट दे रहा है इसका टेम्परेचर घटेगा, जब यहां इसको हीट दे रहा है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। कब तक? अंटिल ये 1000 है, ये 300 है, तो 1000 से कम होते जाएगा और ये 300 से बढ़ते जाएगा। ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। देखो, दिस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, दिस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। हाउ लॉन्ग? अंटिल बोथ रीच सेम फाइनल टेम्परेचर। दैट्स व्हाई दोनों में टीएफ सेम रखा है सर। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ वन? एंट्रोपी चेंज ऑफ वन इज मास ऑफ वन इज 20, mass of 1 is 20, cv, what is cv given sir? 0.743, ln 743, tf I don't know sir, by 1000। excellent। प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ 2, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ मास ऑफ 2? व्हाट इज मास ऑफ 2? ये भी 20 है सर, 20 है, इनटू सीपी। यहां लिखूंगा सर, यहां लिखेगा, तो मास ऑफ दिस इज 20 एंड सीपी इज गिवन, व्हाट इज सीपी सर? 1.039, 1.039 into ln t final by t initial, that is tf by 100, and this should be tf by 300 sir। tf by 300 and this should be equal to 0। now everything is known। इसको उधर ले जाना तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यू कैन कैलकुलेट टीएफ। एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट टीएफ। आई वांट द टेम्परेचर टीएफ सर। क्या आप मुझे टीएफ का वैल्यू दे सकते? प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज, आई वांट द वैल्यू ऑफ टीएफ। आई वांट द वैल्यू ऑफ टीएफ। अब बड़े लोग है रे, आई एम बैक सर, देखो उसका, आई एम बैक सर, बड़े लोग है। आई वांट द वैल्यू ऑफ टीएफ। सर 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 आप नहीं दे पा रहे सर। प्लीज गिव मी द वैल्यू ऑफ टीएफ, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग।
नहीं हो रहा सर, आपसे अब नहीं हो पाएगा। सिंपली आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ टीएफ। ये कैलकुलेट करना नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं सर? देखो ये देखो, 20 इंटू 0.743 एल एन टी एफ बाई 100 माइनस, इसको उधर ले जा रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 इंटू 1.039 एल एन टी एफ बाई 300। तो ये माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, सो 20, ये 20 कैंसिल हो जाएगा। एनीवन गॉट द वैल्यू ऑफ टीएफ? अच्छा वेट कर रहा हूं सर, चलो वेट करेंगे। तो इट इज 0.743। सर ये 1000 है सर, ये 1000 है, मिस्टेक मत करना, ये 1000 है। 0.743 एल एन टी एफ बाई 1000 इज इक्वल टू, ये क्या मैं उल्टा कर सकता हूं सर इसको? माइनस अगर इधर लूंगा तो 1000 बाय आएगा सर, ये माइनस को हटा दे रहा हूं सर, आई एम रिमूविंग दिस माइनस, उल्टा कर रहा हूं सर, इट विल बी 1000 बाई टी एफ इज इक्वल टू 1.039 एल एन टी एफ बाई 300। सॉल्व करेंगे। आपको नहीं आता है तो मैं करके ही दिखाऊंगा सर, आपको बहुत बुरा लगता है सर। ये होगा एल एन 1000 बाई टी एफ इज इक्वल टू 1.039 बाई 0.743 ln tf by 300. So this value is cp by cv, already gamma is given as 1.4, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 आएगा। ln 1000 by tf, this value is 1.4, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट ln tf by 300, तो I will take this as ln 1000 by tf is equal to ln tf by 300 power 1.4। टेक एंटी लॉगरिथम। अब आप एंटी लॉगरिथम कोई वैल्यू दिए सर? ओनली सुजय समा, क्या नाम है, सुजय हैज गिवन, करेक्ट है सर। सुजय बाबूस आंसर इज करेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप लोग कैलकुलेटर विलकुलेटर कुछ मत यूज करो सर, सिंपली मैं जो कर रहा हूं देखो, टेक एंटी लॉगरिथम। इफ आई टेक एंटी लॉगरिथम 1000 बाई टी एफ इज इक्वल टू TF power 1.4 by TF power 1.4 by 300 power 1.4. So therefore 1000 into 300 power 1.4 is equal to what is T a power m, a power n, ये मल्टीप्लाई करो, TF into this 1 plus 1.4 is 2.4। अब देखो तो यहां से हम TF निकाल लेंगे, आंसर आएगा कितना सर? मेरा आंसर आया सर 495.43। तो आप बोलेंगे सर वो तो मैक्सिमम वर्क पूछा है सर। ओ माय गॉड, आई कैन इजीली कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क। अब देखो सर, आई कैन इजीली कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क वंस द टेम्परेचर इज नोन। हाउ टू कैलकुलेट? इधर देखो सर, व्हाट इज क्यू एच सर? देखो प्लीज लिसन केयरफुली, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ध्यान से सुनो, ये अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी यू एम सी वी डी टी, एम इज 20, CV 0.743, and what is the temperature difference? It is 1000 minus final temperature is 495 point कितना है सर? 0.43। तो क्या आप मुझे ये हीट बता सकते सर, ये सप्लाई हीट ये कितना होगा? इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देयरफॉर इट इज एमसीवीडीटी, कितना आ रहा है सर? हे भगवान, मुश्किल है सर अब पढ़ाना आपसे, आपको।
अरे एमसीवीडीटी। तो यू मे बी वंडरिंग सर फाइनल माइनस इनिशियल होना है सर, ये रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन अगर ये रिजेक्ट कर रहा है तो इसके लिए सप्लाई होगा, इसके फॉर दिस इट विल बी प्लस, इसके लिए माइनस होगा, दैट्स इट। व्हाट इज द वैल्यू सर? यस 7497 इज करेक्ट। 7497.82 kilojoule. What about QL? What about this heat? It is at constant pressure. So mCpdt, change in enthalpy, mass is 20, Cp is 1.039. What is the temperature? The final temperature is 495.43 and the initial temperature of this is 300. I repeat sir, m ये confuse मत होना, constant volume mcvdt, constant pressure mcpdt. So what is QL sir? QL sir, only few students are serious. आज मैं नहीं छोड़ूंगा सर, आपको नहीं छोड़ूंगा। 4061। I know heat supply, I know heat rejection. Can I calculate work? Work is equal to supply minus rejection. अगर आपको वर्क चाहिए, definitely this will be the maximum work. What is the reason for maximum work? Because we have taken reversible condition. So work is equal to QH minus QL. That is 7497.82 minus QL is 4061.16. What is the value of work? Work कितना आ रहा है सर? Anyone? What is happening to my students? मुश्किल है सर आपको पढ़ाना। सर आंसर्स आगे बढ़ सकता हूं सर? गुड क्वेश्चन ना? इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन? इट इज इंडीड अ गुड क्वेश्चन सर। मजा आ रहा है सर? मजा 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 रे। कुछ बोलते ही नहीं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the question. I am trying my level best to include all varieties. देखो सर, read the question. मैं यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया सर, मैं तो यहीं पे हूं, आई एम हियर ओनली। आपके वॉचेस का कलेक्शन मस्त है, आपकी तरह। चलो सर। For a gas obeying the equation given by P plus A, it is A sir, by V square into V is equal to RT. The values of critical volume, critical temperature are given. If the values of gas constant are given, the value of A, add, note that the value of A is, okay, that the critical point is the point of inflection on, मजा क्वेश्चन सर। वेट, पहले हम देखेंगे क्या मैथ्स में हम देखे थे, डिड आई नॉट टीच यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? बहुत मस्त पढ़ाया सर, मुझे पता है। व्हाट इज दैट? अगर हम पीवी डायग्राम लेते हैं तो इट इज लाइक दिस सर। देखो, कॉनकेव से कॉन्वेक्स होता है सर। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द कर्व चेंजेस इट्स नेचर फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स। अगर ये पीवी डायग्राम है तो एट द क्रिटिकल पॉइंट डो पी बाई डो वी
इट इज आइसोथर्म सर, ये आइसोथर्म है, तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर शुड बी जीरो। एंड देखो इन्फ्लेक्शन पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑल्सो जीरो। डो पी बाई डो टू पी बाई डो वी स्क्वायर याद है सर आपको? डिड आई नॉट टीच यू सर? क्या न्यू डेट मार्च 23 सर? नहीं समझा मैं ललित, आप कहना क्या चाहते हो? बोला नहीं बोला सर? एट द क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो, बोला नहीं बोला सर? मैं बोला सर, याद है आपको? मैथ्स में पढ़ाया था, कैलकुलस में। सर पूरा भूल गए सर, पूरा भूल गए सर। अच्छा लेक्चर एग्जाम पोस्टपोन, अरे अल्लाह। ओके, सवाल क्या है सर, ये सब क्या कर रहा है? इधर देखो, सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। कैन आई राइट दिस एज P plus A by V square into V is equal to RT? तो इसको हम ऐसे लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते सर। और कैन आई राइट P is equal to RT by V minus A by V square? लिख सकते या नहीं सर? लिख सकते। एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है सर, ये तो क्रिटिकल, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, this is the critical point. So at the critical point there is a point of inflection. तो यहां पे क्या करेंगे? dou p by dou v at constant temperature because it is isotherm. वो बोला है सर, इधर देखो, बोला बोला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन क्रिटिकल आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर। क्या करूं सर? dou p by dou v at constant temperature must be equal to zero. P is known as a function of V. इसको डिफरेंशिएट करना by keeping temperature because he said isotherm. नहीं आ रहा सर आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है सर। तो देखो एक बार, P is equal to RT by V. P is equal to RT by V. P is equal to RT by V minus A by V square. Minus A by V square. ठीक है, let us calculate dou P by dou V by keeping constant temperature. ये वैल्यू क्या होना चाहिए सर? It should be zero. Differentiate करो, R is constant, T is constant. You are differentiating P with respect to V. What is 1 by V differentiation? V power minus 1. 1 by V is V power minus 1 minus 1 into V power minus 1 n into x power n minus 1. So E इसका minus A. What is V power minus 2? ये ऊपर जाएगा, n into x power n minus 1. So it will be minus 2 into v power minus 3. And this should be equal to 0. At the isotherm, this value is 0. तो RT, ये माइनस है सर, माइनस माइनस बाई माइनस 2, तो नीचे आएगा तो v स्क्वायर होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2a, ये नीचे आएगा तो v क्यूब होगा इज इक्वल टू 0. तो 2a बाई वी क्यूब इज इक्वल टू RT बाई वी स्क्वायर. तो v स्क्वायर कट गया, तो A इज इक्वल टू VRT बाई टू. VRT बाई टू, ये सब कहां कैलकुलेट किए सर आप? ये सब कहां? एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऑल दिस यू हैव कैलकुलेटेड at the point of inflection. At the point of inflection means ये कहां पे है सर? It is at the critical point. It is at the critical point. So therefore all these are at the critical point. So A is equal to V at critical point, R is constant, temperature at critical point by 2. All these are at the critical point. Problem में सब कुछ दिया सर, प्रॉब्लम में सब कुछ दिया सर. What is V given? एक बार देखना सर. The critical volume is given as 0.004 and it should be in Kelvin. It should be 373. So what is the volume given? 0.004. तो वॉल्यूम इज गिवन एज 0.004. इधर देखो, वॉल्यूम ए का वैल्यू अगर चाहिए 0.004 दिया है सर वॉल्यूम. क्रिटिकल वॉल्यूम इज 0.004 एंड द टेम्परेचर इज 373 एंड द वैल्यू ऑफ आर, एक बार आर को देखना, आर इज गिवन एज, आर का वैल्यू देखना, द गैस कांस्टेंट इज गिवन एज 250. इट इज 250 by 2. Hope this is clear sir. Anyone? यहां पे एक सवाल आप पूछना था सर, यूनिट पे ध्यान देना.
1 कितना आ रहा है सर? 1 186.5। एक बार यूनिट की तरफ ध्यान देंगे सर। V का यूनिट क्या है सर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मीटर क्यूब पर केजी? V इज मीटर क्यूब पर केजी। R, R किस में दिया सर? R जूल पर केजी पर केल्विन। R टू का कोई यूनिट नहीं, टेम्परेचर इज इन केल्विन। केल्विन केल्विन कट गया। तो कैन आई राइट जूल एज न्यूटन मीटर? कैन आई राइट जूल एज न्यूटन मीटर? यस सर। तो न्यूटन मीटर क्यूब इंटू मीटर इज मीटर पावर 4 बाई के जी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ रहा है न्यूटन मीटर पावर 4 बाई के जी स्क्वायर। क्या उसी यूनिट में पूछा है सर? न्यूटन मीटर पावर 4 बाई के जी स्क्वायर। न्यूटन मीटर पावर, यस, 186.5 इज द राइट आंसर। वाह रे वाह, वाह रे वाह। मस्त क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 21 था। अरे बाबा, नाउ लेट्स गो टू 22nd। डोंट वरी सर। हाँ, ओ माय गॉड। पढ़ो। पढ़ो सर। मस्त क्वेश्चन है सर ये। गुड क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। बंदा खुश हो कि नहीं? कम ऑन कम ऑन। कहां गया हमारा, क्या बोलते, हिमेश बाबू? पता नहीं कहां गया, डर गया वो बंदा। बाबू हिमेश। हिमेश बाबू, पता नहीं कहां गया, डर गया वो बंदा। बाबू हिमेश गया, देखो कमेंट ही नहीं। आई एम बैक सर बोला, बैक बैक ही हो गया। रीड द क्वेश्चन। An insulated chamber is divided into two parts of 1 meter cube each. Okay. Initially by a locked piston. Side A contains 200 kilopascal. कहां गया रे वो सर? आज के क्वेश्चन समझ में आया सर? यहां पे किलो पास्कल है सर। 300 केल्विन। यहां का टेम्परेचर दिया, देखो एक बार। साइड ए कंटेन्स एयर एट 200 kilopascal, 300 Kelvin, and side B contains air at 1 megapascal, 1000 Kelvin. Piston is now unlocked so that it is free to move and conducts heat so that air comes to a uniform equilibrium temperature. Which of the following is correct? Hey Bhagwan. Let me show what this question is all about. एक बार मैं डेटा लिख लेता हूं सर। एक बार मैं डेटा लिख लेता हूं सर। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सर? मजा 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 मजा। क्वेश्चन नंबर 22। लेट मी राइट द डेटा। यहां पे एक पिस्टन है सर।
but clearly this is completely insulated. This side we have air, this side also we have air. ठीक है sir. The volume of this is 1 meter cube and the volume of this is 1 meter cube. Here the pressure is 200 kilopascal. Here the pressure is 1 megapascal, means 1000 kilopascal. 1 megapascal is 1000 kilopascal. This side the temperature is given, already दिया है sir. मजा 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 कितना 300,000. क्या बोला है सर? यस, ठीक है, आई डू इट सर, डोंट वरी. अब बोल क्या रहा है सर? एक्चुअली देर इज अ पिन हियर. इस पिन को पिन से लॉक किए थे पहले. नाउ द पिन इज रिमूव्ड. व्हेन द पिन इज रिमूव्ड, दिस विल स्लाइड फ्रीली. मुझे लग रहा है यहां प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर ये पुश करेगा सर, ये पुश करेगा सर, ये पुश करेगा. ठीक है सर, इसको पुश करेगा. बट यहां पे और एक दिक्कत है सर. इट इज अ कंडक्टिंग पिस्टन. व्हेन इट इज अ कंडक्टिंग पिस्टन, this is at 1000 Kelvin, this is at 300 Kelvin. So there will be heat transfer from B to A. क्या करेंगे सर? कुछ आइडिया क्लिक नहीं हो रहा सर मुझे. What is the process undergone by this? एडियाबैटिक. ए वाले को देख रहा हूं, ए वाले को तो एडियाबैटिक बोल ही नहीं सकते, बिकॉज पी से हीट ट्रांसफर हो रहा है और प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है सर. ये पुश करेगा तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मुझे. व्हाट इज द प्रोसेस अंडरगॉन बाय ए, व्हाट इज द प्रोसेस अंडरगॉन बाय बी, कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा सर. कुछ आइडिया दो सर. आप प्रॉब्लम को इजी करने के लिए कुछ आइडिया दो सर. ये मस्त क्वेश्चन है सर, इसको लीव मत करना. मैं क्या कर रहा हूं पता है सर? सुनो, मैं भी बहुत तो काम कर रहा हूं. कैसा? लेट मी टेक बोथ टुगेदर एज द सिस्टम. लेट मी टेक बोथ एज द सिस्टम. क्योंकि इंडिविजुअल लेंगे तो कुछ अता पता नहीं चलेगा सर. हाउ मच हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज द फाइनल स्टेट, ये बहुत मुश्किल है सर. कंप्लीट को एक सिस्टम ले लूंगा. इससे क्या फायदा होगा सर? एनीवन, इससे क्या फायदा होगा? इफ आई टेक दिस एज द कंप्लीट सिस्टम, दिस इज इंसुलेटेड. दिस टोटल इज अ रिजिड कंटेनर. ये पूरा कंटेनर, अंदर वॉल्यूम्स चेंज हो रहे हैं लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी पुट टुगेदर इज नॉट चेंजिंग. अग्रीड और नॉट सर? कुछ तो बोलो सर. नाउ इसको पूरे को ए प्लस बी को सिस्टम ले लो सर. पता है क्या होगा? डी डैश क्यू इज इक्वल टू कंप्लीट के लिए डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू. For AB, what is the total heat transfer? AB is my complete system. पूरा insulated है, zero. It is a rigid container. It is a rigid container. तो क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है सर? ये पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है. माय सिस्टम, ये जो भी हो रहा है ये अंदर हो रहा है. सो वर्क ट्रांसफर के लिए इट शुड क्रॉस द बाउंड्री. दिस इज माय बाउंड्री. इस बाउंड्री से कोई वर्क क्रॉस नहीं हो रहा है. अंदर अंदर हो रहा है ये. सो ये और ये मेरा सिस्टम है. सो इट इज अ रिजिड कंटेनर. टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वर्क इज आल्सो जीरो. तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ये और बी का जीरो हो जाएगा सर. So I will write this as internal energy change. Internal energy is an extensive property. If you want the total internal energy change, it should be the internal energy change A plus internal energy change of B. बात समझ में आ गई सर? What is the internal energy change of B? A mcv dt of A, mcv dt of B, and that should be equal to zero because this is zero. What is the, oh my god, masses are not known. हम कैलकुलेट करेंगे सर. PV is equal to MRT.
तो mass is PV by RT. Mass is PV by RT. Mass is PV by RT. Let us calculate mass of A. So pressure of A is 200. Volume of A is 1. By R, it is air, 0.287. What is the temperature of A? 300. Can you give me mass of air? Similarly, mass of B is PV by RT. P is 1000 kilopascal. And the volume is 1. By R is 0.287. And the temperature of this is 1000. So I will get mass of B. Please आप मुझे दोनों के masses बता दीजिए. Final temperature is 720. वाह, मस्त सर, मस्त बोले आप, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. तो व्हाट इज द मास ऑफ ए सर? हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ ए 2.323 and what is the mass of B? 3.48. मेरे प्यारे दोस्तों, once this piston is conducting, finally what will be the temperature of both? Same होगा, because finally they are reaching equilibrium. Finally same hoga sir. There is a heat transfer from high temperature to low temperature until ye dekho, it is gaining heat, it is losing heat, so its temperature drops down, its temperature increases. How long? Until they reach same temperature. So now I read mass of A. What is mass of A? 2.323 and CV for air is 0.718 into the final temperature of A is same. And what is the initial temperature of A? A ka initial temperature is 300. Very good. Plus mass of B. What is mass of B, sir? What is mass of B? 3.4843 into CV. It is 0.718. And the final temperature is not known. Minus MCV/dt is final minus initial. What is the initial temperature of this? 1000. So everything is known except the final temperature. क्या आप मुझे फाइनल टेम्परेचर दे सकते सिस्टम का? Anyone? So we can calculate. I think when I calculated, कितना आ रहा है सर? I think we are getting 720. All are in Kelvin. I think we are getting 720. Sir, say something, sir. Is 720 correct? वही तो पूछा है सर. The final equilibrium temperature is 720. बिल्कुल correct है सर. Then what is he asking? The final equilibrium pressure, the final volumes. Okay. How do we proceed? यहां से. No one is giving answer, sir. हो क्या रहा है सर मेरे बच्चों को? अच्छा, टायर्ड हो गए आप लोग. समझ में आ रहा है सर. 720 is correct. Now, finally what will happen? The high pressure will push the lower pressure. So when it is pushing, its pressure decreases because it is expanding. It is compressed, so its pressure increases. So until both reach same equilibrium temperature, finally it should come not only in thermal equilibrium but also in mechanical equilibrium. तो क्या होना चाहिए सर? Let me erase all this. तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना सर. Don't worry, don't worry. देखो, finally देखो एक बार. Can I say this volume plus this volume is constant? बोलो सर. 751 is wrong, 720 is correct.
कैन आई से दिस वॉल्यूम, देखो एक बार देखना सर, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, वॉल्यूम इज एमआरटी बाई पी, तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस, इट विल बी एम आर, देखो एम आर टी एफ बाई पी एफ, इट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस the final volume of this. What is the volume? MRT by MRT by PF. This is for A, this is for B. I repeat, this is the volume, MRT by P is the volume of A, final volume. This is the volume of B. What should be the total volume? Whether it is sliding like this or so, इसका volume बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, लेकिन summation क्या होना चाहिए सर? 1 plus 1, it should be equal to 2. So it may be sliding to the left. So this volume is increasing, this volume is decreasing, but the total volume is 2. What is the mass of A? मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ देखो, finally both are at same final temperature, TF same है. Finally both are at the same pressure because mechanical equilibrium reach होना चाहिए, because high pressure push करेगा तो ये pressure घटेगा, this will decrease, this will increase. How long? Until both reach same temperature. तो now RTF by PF को बाहर ले लेंगे because R is constant for same, final temperature is same for both because it is in thermal equilibrium, final pressure is same, mechanical equilibrium, into MA plus MB is equal to 2. Very good, sirs. What is R? It is 8.287. What is the final temperature? It is 720. By the final pressure, I don't know. और एक बात है सर, this pressure will be in kilopascal. Why? Because R is in kilojoule per kg per Kelvin. So already you know MA plus MB. What is mass of A, sirs? What is the mass of A, sir? Mass of A is 2.323. What is the mass of B? 3.4843. This should be equal to 2. Everything is known except PF. Can you give me the value of PF? सर आप अब हो गया सर आपका एनर्जी लेवल, व्हाट इज पीएफ? $600 is absolutely correct. The final pressure is 800. गलत. It is 600. Can I calculate the final volume? इधर देखो, let me calculate volume of A. तो final volume of A is, mass is 2.323, A का mass, R is 0.287, and the final temperature is 720, and the final pressure is 600. मुझे पक्का यकीन है कि ये वॉल्यूम 1 से कम होना चाहिए, बिकॉज हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर वाला पुश करेगा तो ये 1 से कम होना ही चाहिए. तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए? यस, वंडरफुल सर. व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बी? बहुत सिंपल है सर. टोटल 2 में से, आउट ऑफ टोटल 2 यू रिमूव 0.8, आउट ऑफ टोटल 2 0.8 निकाल देना. सो देयरफॉर इट विल बी 1.2. देखो, the final equilibrium volume of A is 0.8, correct. After equilibrium is written, the volume of B is 1.2, so therefore it is A, C, D are correct. देखो सर, आपको लग रहा होगा मैं 21 क्वेश्चन सी किया, नहीं सर, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करके मेनी क्वेश्चंस आई हैव डन, सब क्वेश्चंस में इट इज इक्वल टू 40 क्वेश्चन. सर नहीं समझ में आ रहा सर आपको? अच्छा, आप बिजी थे? अच्छा, देखो सर, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दिस 1 मेगा पास्कल मींस 1000 किलो पास्कल. व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दिस 200? किसका प्रेशर ज्यादा है सर? राइट वाले का ज्यादा है, तो हाई प्रेशर वाला ये पुश नहीं करेगा सर. जब ये प्रेशर कम है तो हाई प्रेशर का जब लॉक था तो इट वाज अंडर स्टैटिक कंडीशंस. जब ये लॉक निकाल दिए, अब ये पिस्टन हाई प्रेशर वाला पुश करेगा, तो ये क्या होगा सर? इनिशियली अगर 1 है
तो ये क्या होना चाहिए सर, ये पुश करेगा तो ये एक्सपैंड होगा, तो 1 से ज्यादा होगा, ये कंप्रेस होगा तो ये इनिशियल वॉल्यूम इसका 1 था, 1 से कम होगा। अभी भी नहीं है सर? ओह गॉट इट, ओह गॉट इट, नमूने मिल गए मेरे, मेरे नमूने मिल गए रे। अच्छा रे बाबा, ठीक है, शैल वी स्टॉप? आप बताइए सर, 22 क्वेश्चन किए सर, मस्त किए सर, सो हैप्पी। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अभी बताइए सर, ग्रेट सेशन, थैंक यू। प्लीज आप कमेंट्स लीव करें सर, क्लास के बाद कमेंट्स लीव करो, अच्छा लगा या बुरा लगा, बुरा लगा तो बुरा बोल देना, अच्छा लगा तो अच्छा बोल देना। एंड आई स्वेयर आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम। भी मुझे बताओ सर, क्या मैराथन सेशन चाहिए सर आपको? मुझे बताइए, व्हाट मैराथन सेशंस आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? बताओ। मैं सोच रहा हूं मशीन डिजाइन का और मैथमेटिक्स का, सॉम, फ्लूइड सॉम, ठीक है सर, सॉम एंड मैथ्स मस्त करेंगे सर, सॉम मैथ्स कर लेंगे सर। ईटीडी करूं? आज के क्वेश्चंस अच्छे थे सर, जेम्स एंजॉयड, मुझे भी अच्छा लगा, जेम्स एंजॉयड, सॉम करेंगे सर। आई हैव नॉट वेस्टेड टाइम सर। मैं सोच रहा हूं सॉम मैथमेटिक्स करूं, ईटीडी लास्ट में, ठीक है, एटीडी करेंगे सर, बहुत सही बोले आप। आज ना बहुत प्रॉब्लम हुआ सर लिंक का। मैं सोच रहा हूं मैथमेटिक्स, सॉम फ्लूइड, एफएमबी, ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे सर। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, मैं अब देखो आई डोंट टेक जनरली ऑन यूट्यूब, तो आज थोड़ा आदत हो गया सर, मुझे यूट्यूब का आदत नहीं है सर, सीरियसली। तो टुडे आई लव्ड द सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा सर? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, आई एम एंडिंग द सेशन, आई एम एंडिंग द सेशन। ठीक है सर, ठीक है, तो कमेंट लीव करना भूलना मत, ओके चलो, आई एम एंडिंग द सेशन, गुड बाय गुड बाय। चलो, चलिए चलिए।